घाट कणास झाड़ाबांती आईन श्रृंखला कटनी चटनी दरदाम वृद्धि प्रसंग उठाई बीजेपी सरकार को काठगड़ा को टाणिबे विरोधी सहित आईन श्रृंखला स्थिति कणास झाड़ाबांती धान कटनी चटनी दरदाम वृद्धि उठाई बीजेपी सरकार को घेरिबे कांग्रेस उठाइब कोटिया और पोलाभरम प्रसंग। महानदी जल विवादर समाधान होउनथिबारु ए संपर्क में आलोचना पाई दाबी करिबो बीजेडी कणास और बांकी समेत राज्यर आउ केतेक अंचल में जल प्रदूषण जोगु जेभଳି रोग व्याधि व्यापुछि से कथा भी गृह उठाइबे विरोधी। आईन श्रृंखला बिगिड़ा बेरोजगारी ई केवाईसी ना लोके हंतसंत होगा कथा उठाई सरकार को अकल पकाइबा योजना करुछि कांग्रेस। सेपटे विधायक दल बैठक में विरोधी को मुकाबला करने योजना करिछि बीजेपी। संसदीय व्यापार मंत्री कहते कि विरोधी गठनमूलक भाव में जो प्रसंग उठाइबे से आलोचना सरकार प्रस्तुत रहिछन्ति। राजरास्ता को ओह्लाइले पंचायतराज पानी जल जोगाणर महासंघ भुवनेश्वर लोयर पिमजी में 5 दफा दाबी पूरण नहीं आंदोलन करछन्ति। सरकार प्रदान करुवा दैनिक 108 टंका पारिश्रमिक रे परिवार प्रतिपोषण करने संभव हेउनाही बोली आंदोलनकारी कहछन्ति। दाबी पूरण न होगा पर्यंत कार्य बंद कर अनशन बसिबे बोली कहछन्ति। 10 दफा दाबी नहीं गांधी मार्ग में बसिबा सहित पूर्व सरकार अवहेलित करथिबा नुआ सरकार शुणिबे बोली कहछन्ति। आरडब्ल्यूएसएस द्वारा ब्लॉक माध्यम कुशली कारीगर दरमा वृद्धि सहित नलकूप कारीगर और पंप चालक मानक मेगा प्रकल्प ठारे नियमित नियुक्ति पाई दाबी होइछे। दुर्घटना जनित मृत्यु हेले परिवार को 20 लाख अनुकंपामूलक राशि प्रदान करने पाई दाबी करा जायछि। है इस देश 1984 सिख विरोधी हिंसार एक मामलें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी साब्यस्त। दिल्लीर स्वतंत्र कोर्ट यह राय शुणाई। आसंता 18 तारिख में कोर्ट सज्जन कुमार प्रति दंड विधान कर 1984 नवेम्बर 1 दिल्ली राजेंद्र नगर में एस जसवंत सिंह एवं तांको पुओ एस तुरणदीप सिंह को हत्या कर जायथिला। सज्जन कुमार नेतृत्व में शताधिक लोक राजेंद्र नगर जाई गंडगोल करथिले, हिंसाकांड घटाइथिले बोली अभियोग होइतिला। सामना को आसिला केरल नर्सिंग कॉलेज अमानवीय रैगिंग। कोटायम सरकारी नर्सिंग होम रे होइतिबा ए रैगिंग नहीं एबे सारा देश चर्चा। प्रथम वर्षर 3 जन छात्रों प्रति 3 मास धरी निहाती अमानवीय रैगिंग करि चलिथिले नर्सिंग तृतीय वर्षर 5 जन छात्र। रैगिंग शिकार होइतिबा छात्र माने तिरुवनंतपुरम थानार अभियोग पर पुलिस संपृक्त 5 जन गिरफ्त करछि। आउ नाहाती अयोध्या राम मंदिर पूज्य पूजक सत्येंद्र दास। लखनऊ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज और हॉस्पिटल रे चिकित्सा बेले तांकर मृत्यु होईछि। तांकु 83 वर्ष बयस होइतिला। स्वास्थ्यगत समस्या देखा देबारु गत 3 तारिख रे तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिला। से उच्च रक्तचाप मधुमेह एवं स्नायुविक रोग रे पीड़ित थिले। 20 वर्ष बयसरु संथ जीवन आरंभ करथिले सत्येंद्र दास। गाजारे अमेरिकार राज ही चलिबो। गाजा ही हेबो अमेरिकार आउ एक अंश विशेष। गाजा प्रसंग में पुणी एमिति दोहराइछन्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। अरुंधति ज्वेलर्स रो बेस्ट वेडिंग कलेक्शन रे सर्वश्रेष्ठ डिस्काउंट सह अनेक आकर्षणीय उपहार 9 जण भाग्यशाली दंपति को पाई फॉरेन हॉलिडे ट्रिप सह जीरो मेकिंग चार्ज भली ऐतिहासिक ऑफर रो सुजोग आमे अछि ना। अरुंधति ज्वेलर्स रो बेस्ट वेडिंग कलेक्शन रे सर्वश्रेष्ठ डिस्काउंट सह अनेक आकर्षणीय उपहार 9 जण भाग्यशाली दंपति को पाई फॉरेन हॉलिडे ट्रिप सह जीरो मेकिंग चार्ज भली ऐतिहासिक ऑफर रो सुजोग आमे अछि ना। अरुंधति ज्वेलर्स रो 5 स्टार प्रॉमिस आमे अछि ना। विजिलेंस जाल रे एडीईओ एस पार्थसारथी विषयी पार्थसारथी घर समेत 7टी स्थान में विजिलेंस एककालीन रेड करिछि। कोरापुट जिला कोटपाड़ बटसणा पंचायत एडीईओ पार्थसारथी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पार्थसारथी घरे चढ़ाऊ चली। बोरीगुमा चांपिया स्थित घरे विजिलेंस रेड करुछि। पार्थसारथी भाई और तांकर संपर्कियों घरे एककालीन एका समय विजिलेंस चढ़ाऊ करिछि। चांपिया रे थिबा काजू प्रोसेसिंग यूनिट रे मध्य चढ़ाऊ चली। 2 एडिशनल एसपी 4 डीएसपी 6 इंस्पेक्टर चढ़ाऊ रे शामिल होइछन्ती। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे तांकर घरे वर्तमान विजिलेंस रेड करुछि। दीपक सामल हमर करेस्पोंडेंट फोन लाइन रे रहउछन्ती हम सहित अधिक सूचना देबा पई। दीपक विजिलेंस जाल रे बे एडीओ रहउछन्ती। एडीओ को घर समेत विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ चली। कोन अपडेट सूचना दीपक के बाबद रहउछि? देखो कोरापुट जिला कोटपड़ा ब्लॉक बरसणा ग्राम पंचायत अकाउंटेंट कम
डाटा एंट्री ऑपरेटर एस पार्थ सारथी विषय घरे विजिलेंस चढ़ाऊ करुच्ची 7टी स्थान में विजिलेंस एककालीन चढ़ाऊ करुच्ची जो 2 जन अतिरिक्त एसपी 4 जन डीएसपी 6 जन इन्स्पेक्टर 6 जन एएसआई सामिल अच्छी चढ़ाऊ बेले विशेषकर जड़े डाटा एंट्री ऑपरेटर को जी संपत्ति सामना को आसला ताहा विजिलेंस आखि खोसिला भाया विशेषकर कोरापुट रे तांकर घर रही मार्केट कम्प्लेक्स रही रिलेटिव घर रेड होची रेड समय किसी गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र विजिलेंस हासिल कलानी सहित घर किसी टंका एवं सरकार ठाब कलानी तेणु एवं सुधा जो सब संपत्ति ठाब है से संपत्ति को जदि आम आकलन करवा तेज किभली भाव से एते संपत्तिर मालिक हेले ताकू नहीं प्रश्न उठिलानी विशेषकर जड़े अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एते टंकार संपत्ति हवा पछरे कोठू उत्स थिला विशेषकर रोजगार केते थिला इनकम सोर्स को थिला ता बाद आउ कोठू पाखक टंका आसुला ए संक्रांत में विजिलेंस एवं खोलताल आरंभ कर अल्प समय पूर्व रेड आरंभ होती तेणु विजिलेंस कहवा कथा जो संपत्ति बेसुधा सामना को आसला सन्देहजनक एवं सब संपत्तिर ए पर्यंत हिसाब से दे पारना जहा फल धीरे धीरे सन्देह बढ़ुची तेणु जिते रेड जारी रेड आगे कंटिन्यू कर परवर्ती मुहूर्त में स्पष्ट हम जे बाबू जनक किभली भाव में बेआईन भाव में टंका रोजगार करते क्यों सोर्स टंका रोजगार करते क्यों मैंने सहयोग करते सब तथ्य सामने को आसपार ए पर्यंत केते कौन संपत्तिर सुराग पाई विजिलेंस ए बाबद किसी सूचना मिललानी कि दीपक जदिओ किसी टंका ठाब होइछि सोना गहना घर ठाब होइछि ता सहित किसी प्लॉट ठाब हलानी जदिओ निर्दिष्ट केते संपत्ति ठाब हलानी ता विजिलेंस स्पष्ट करनी अल्प समय विजिलेंस स्पष्ट करिवो किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जो सब घर गुड़िक विजिलेंस रेड करुच्ची अधिकांश घर गुड़िक निज नाम करते विशेषकर घर गुड़िक से केबे ठारू करथिले एवं द्वितीय कथा होछि जो प्लॉट गुड़िक से किनी कोरापुट रे से प्लॉट से केबेठू किनी विशेषकर जो टंका आसुला कौठू कहीं गुरुत्वपूर्ण कथा होछि ए पर्यंत तांकर इनकम सोर्स रो कोनोसी तथ्य से सामना को आनी पारु नाहांती अर्थात जो सब संपत्ति ठूल करछंती संपत्ति संबंध से सब तथ्य विजिलेंस को दे पारु जहाँ फल धीरे धीरे सन्देह बढ़ुची या सहित जो मैंने संपर्क अच्छा घरे विजिलेंस रेड करुच्ची तेणु विजिलेंस कहवा कथा अपेक्षा करा पड़ो जिते सब संपत्तिर सामना को आसो स्पष्ट हम जे बाबू जनक किभली भाव में कला टंका रोजगार करते क्यों सोर्स टंका आसूला सबकि स्पष्ट हो पार कहीं जो से पंचायत ऑफिस रे डाटा एंट्री ऑपरेटर अच्छा अकाउंटेंट अच्छा तेणु कहुच्छी पंचायत जो सब काम गुड़िक आसूला से कम गुड़िक से हेरफेर कर सन्देह कर पूर्व ना अभियोग थिला से आधार विजिलेंस रेड करुच्ची ओके आउ जने सरकारी बाबू घर विजिलेंस रेड चली पुणी थे विजिलेंस पंजारे आउ जने सरकारी अधिकारी एडीओ घरे वर्तमान रेड चली कोटपाड़ बटसणा पंचायत एडीओ घरे विजिलेंस एक काल रेड कर बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपंकर सूचना। कटक सीएमसी बैठक में हो हल्ला बीजेपी बीजेडी और कांग्रेस कॉर्पोरेटर मुहांमुही होती स्थिति एमती होता जे मेयर बैठक अधारू उठी पड़ाई मुक्ता योजना होता खर्च को नहीं आज कटक महानगर निगम काउंसिल बैठक में हो हल्ला होता राज्य सरकार अनुदान ठारू अधिक खर्च हो भरणा कर किए एने प्रश्न उठा बेले प्रसंग में उभय बीजेपी और कांग्रेस अप्रसंग कर हो हल्ला करते विरोधी कॉर्पोरेटर कहवा कथा सरकार बदलवा सहित मुक्ता योजना बंद होता किंतु जो सब कम होती तार भरणा कर किए कारण मंजूर होता अर्थराशि प्राय 2 गुणा बिल होती तेणु यार तदंत कर टंका दि जाऊ बीजेपी और कांग्रेस दादन चालाण नहीं कंधमाल जिले में पोस्टर मारिबा घटना रे जिला प्रशासन तनाघना करुच्ची घटना को नहीं रायकिया बस स्टाण्ड में चढ़ाऊ कर रायकिया ठारू केरल जाउथिबा 2टी बस टिकेट काउंटर में चढ़ाऊ कर जिला श्रम अधिकारी और रायकिया प्रशासन मिलित भाव में चढ़ाऊ कर जो मैंने केरल जावाई टिकेट काटी से ना और फोन नंबर संग्रह कर जोगाजोग कर परिस्थिति अनुधान कर जिला श्रम अधिकारी विश्वरंजन कौर कहते
कंधमाल जिला रायकिया ओजी उदयगिरी ब्लॉक रे रायकिया केरल जीवा नहीं विभिन्न स्थान में पोस्टर लगी। प्रति शुक्रवार रायकिया केरल को बस जोगे केरल जावाक विभिन्न स्थान में पोस्टर मरा जाए। 3टी फोन नंबर पोस्टर में उल्लेख कर रायकिया 2टी काउंटर में केरल जावाई टिकेट कटा जाउछि। प्रति सप्ताह एकाधिक श्रमिक बस रे काम करने को केरल जाउछंती। असुरक्षित भाव में बस रे लंबा रास्ता जाउथिले भी प्रशासन निघा नहीं। ओडिशा समेत समग्र देश में मानव चालान एवं महिला और शिशु चालान एक संवेदनशील प्रसंग। अधिकांश क्षेत्र में ट्रेन जोगे ही मानव चालान होता है। एपरी क्षेत्र में रेलवाई गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। रेलवाई अधिकारी और कर्मचारी दक्षता विकास सहित व्यापक सचेतनतार आवश्यकता रही। पुरी रे यह कहते जातीय महिला कमिशन अध्यक्ष विजया किशोरी राहतकर पुरी गस्तरे आसी श्रीमंदिर महाप्रभु को दर्शन कर आशीर्वाद नहीं। विजया श्रीमंदिर निकट में पहुंचा पर श्रीमंदिर और जिला प्रशासन पक्षर स्वागत कर दर्शन पर संस्कृति भवन में मानव चालान रोकवाई दक्षता विकास कार्यक्रम से जोग देते। पश्चिम ओडिशा समेत भारतर बड़ बड़ रेल स्टेशन में रेलवाई अधिकारी को नहीं दक्षता विकास और सचेतनता कार्यक्रम आयोजन करा जिवो। विशेषकर महिला चालान शिशु बिक्री रोकवाई कमिशन कार्य करिवो से कहते। रणवीर अलावादिया प्रतिक्रिया उपरे उत्तर रखिंट जातीय महिला कमिशन अध्यक्ष। आगामी 27 तारीख में महिला कमिशन निकट हाजर होगापी समन जारी कर क्यों मानकर संपृक्ति रही तदंत परिसर को नहीं। भुवनेश्वर गांधी मार्ग में गर्जिले महिला राजरास्ता कोल्हाइले ओडिया जीविका मिशन ईसी संघ। 30टी जिलूर प्राय 10,000 ईसी महिला एकत्रित होई राज्य सरकार नूतन निर्देशनामा विरोध कर सहित यह प्रत्याहार करने से दावी कर कांग्रेस भवन निकट एकत्रित होई एक विराट शोभायात्रा एमाने लोअर पेमजीर धारणा स्थल में पहुंची। सेठारे एक सभार आयोजन करा। ओडिशा यात्रा दर्शक परिवार पक्षर कलाकार सम्मान प्रदान कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएगी। यात्रा अभिनय कर अभिनेता और अभिनेत्री को प्रोत्साहन करने जपरी आग को भल अभिनय करेंगे से नहीं संबर्धना कार्यक्रम आयोजन कर कार्यक्रम में वरिष्ठ अभिनेता तथा यात्रा जगतर खलनायक दैतारी पंडा गौर दास एवं कावेरी पाढ़ी अभिनेत्री प्रमुख अनेक वरिष्ठ युव कलाकार मानक संबर्धित कर। मयूरभंज जिले में दिनकू दिन विद्युत विभाग मनमानी बढ़िबार लगी। टीपी एनओडीएल विभिन्न समय अघोषित विद्युत कार्ड जो कलबल होती लोके सेपरी स्मार्ट मीटर को नहीं लोके अभियोग कर तेणु बारिपदा समेत तुलियापदा ब्लॉक में लोके 8 दफा दाबी नहीं मुख्यमंत्री उद्देश्य ब्लॉक समिति कार्यालय दाबीपत्र प्रदान कर दाबी तुरंत पूरण कर स्थानीय बासिंदा और अणराजनैतिक संगठन भंजा सेना। केवल से नुहे यह दाबी यथाशीघ्र पूरण न करागले आंदोलन कर चेतावनी देखते। सेपटे दाबीपत्र जिला कार्यालय को पठाइबा सहित किभली कार्यकारी हो से विषय आलोचना कर ब्लॉक उपविभाग अधिकारी। सप्तम श्रेणी छात्री को शिक्षक अश्रद्धाचरण कर अभियोग प्रतिवाद में छात्र छात्री और अभिभावकों धारणा। जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लॉक रिखीदीपुर सरकारी उच्च विद्यालय सम्मुखें छात्र छात्री और ग्रामवासी धारणा देते। असदाचरण कर शिक्षकों विरोध में जेनापुर थाना लिखित अभियोग कर शिक्षकों विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान सहित गिरफ्त दावी कर अभिभावक। घटनास्थल में जेनापुर और पुलिस और जाजपुर रोड एसडीपीओ पहुंची ग्रामवासी को बुझासुझा कर प्रशासन पक्षर ए दिगरे दृढ़ कार्यानुष्ठान दावी होती। फाइन निजुक्ति और मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदान दाबी में गांव साथी संघर प्रतिवाद। सुंदरगढ़ शाखा पक्षर जिलापाल कार्यालय सम्मुखें गणधारणा दिया सहित विक्षोभ प्रदर्शन कर पूर्व अनेक आंदोलन करने केवल प्रतिश्रुति दि जाउछि। निजे मुख्यमंत्री पूर्व सरकार समय विधानसभा एवं बाहर गांव साथी प्रोत्साहन राशि अति कम 10,000 मासिक होगा उचित बोली एवं क्षमता को आसवा पर प्रतिश्रुति पालन करने मुख्यमंत्री को दाबी जणाई जिलापाल जरिए दाबीपत्र प्रदान कर गांव साथी। झारसुगुड़ा जिलार उच्च शिक्षार विकास दाबी में जिला छात्र सामुख्य संगठन विशाल शोभायात्रा। झारसुगुड़ा लक्ष्मीनारायण कॉलेज को संपूर्ण सरकारी कॉलेज मान्यता दाबी में जिलापाल ऑफिस आगे अहोरात्र धारणा दी जाएगी। जिलार विभिन्न कॉलेज रे छात्र छात्री और पूर्वतन छात्र छात्री सहित पूर्वतन विधायिका दीपाली दास पुराना बसस्टाण्ड निकट एक विराट शोभायात्रा बाहरी जिलापाल कार्यालय सम्मुखें धारणा बसते। 6 दफा दाबी नहीं अहोरात्र धारणा बसते छात्र छात्री। प्रशासन तरफ प्रतिश्रुति न मिलवा पर्यंत यह धारणा जारी रही चेतावनी देछि जिला छात्र सामुख्य। टमाट पर एवं कंचा लंकार अभावी बिक्री।
गंजाम जिला बड़ माधोपुरी में कंचा लंकार अभावी बिक्री देखा मिली। कंचा लंका किलो पिछा 40 टंका खसी आसी 17 टंका गत 10 दिन है कंचा लंकार दर खसी बेले चाषी एवं कंचा लंका तोड़ा इच्छा प्रकाश करूना। 17 टंका कंचा लंका बिक्री करने निमंते पछघुंचा देउछंती चाषी। कंचा लंका चाष लक्ष लक्ष टंका ऋण करिसेंती चाषी। जदि किलो पिछा 17 टंका व्यवसायी माने कंचा लंका नेबे तेबे किभली ऋण परिशोध करिवे बोली प्रश्न करिसेंती चाषी। तो कंचा लंका केवल ओडिशा नुहे बरं पश्चिमबंग, राजस्थान, दिल्ली, नासिक, मुंबई सहित विभिन्न राज्यों को बिक्री करा जाय थाए। हेले एबे अभावी बिक्री को नहीं चिंतार चाषी। आसंता शिक्षा वर्षु नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री को मिलिबो मध्याह्न भोजन। प्रथम रु अष्टम श्रेणी पिलांक भली एणिकी नवम और दशम पिलांक मध्य स्कूल में मध्याह्न भोजन दियाजिबो। एनी कटक रे मुख्यमंत्री मोहन माझी घोषणा करथिले। घोषणा उपरे स्पष्ट करिसेंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गण। एनी बजेट रे प्रावधान कराजिबो बोली मंत्री कहते। पूर्व सरकार प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए पिलांक मध्याह्न भोजन देइथिबा बेले नवम और दशम पिला एथुर वंचित होउथिले, जाहाको आखि आगे रखी राज्य सरकार एभली निष्पत्ति निछंती। राज्य सरकार यार संपूर्ण खर्च वहन करिबो बोली मंत्री नित्यानंद गंड कहते। उन्नीस 1984 सिख विरोधी हिंसार एक मामला रे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी साब्यस्त। दिल्लीर स्वतंत्र कोर्ट एही राय सुनाइछंती। आसंता 18 तारिख रे कोर्ट सज्जन कुमार प्रति दंड विधान कराजिबो। 1984 नवेम्बर 1 रे दिल्ली राजेंद्र नगर थिबा एस जसवंत सिंह एवं तांको पुओ एस तुरणदीप सिंह को हत्या करा जायथिला। सज्जन कुमार नेतृत्व में शताधिक लोक राजेंद्र नगर जाई गंडगोल करथिले, हिंसाकांड घटाइथिले बोली अभियोग होइतिला। सामना को आसिला केरल नर्सिंग कॉलेज रो अमानवीय रैगिंग। कोटायम सरकारी नर्सिंग होम रे होइतिबा ए रैगिंग नै एबे सारा देश रे चर्चा। प्रथम वर्षर 3 जण छात्रंक प्रति 3 मास धरि निहाती अमानवीय रैगिंग करि चलिथिले नर्सिंग तृतीय वर्षर 5 जण छात्र। रैगिंग शिकार होइतिबा छात्र माने तिरुवनंतपुरम रो थानार अभियोग पर पुलिस संपृक्त 5 जण गिरफ करछि। आउ नाहाती अयोध्या राम मंदिर पूज्य पूजक सत्येंद्र दास। लखनऊ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज और हॉस्पिटल रे चिकित्सा बेले तांकर मृत्यु होईछि। तांको 99 प्रस्तुत करूछंती गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन नेबा आउ कस्टमर रिफर करिबा उपरे पांतु सुवर्ण सुजोग। लक्षाधिक मूल्यर गिफ्ट वाउचर जीति भारत तासह जीतंतो आपण 24 कैरेट शुद्ध सुना। गोल्ड लोन नेबा पाई आज ही मुथुट फाइनेंस ब्रांच को आसंतु किंबा कॉल करंतु 1-800-313-1212। आज विधानसभा बजेट अधिवेशन प्रथम अभिभाषण रखिबे राज्यपाल। 17 रे आगत ହେବ राज्य बजेट। शासक दल को घेरिब विरोधी बीजेडी। विरोधी दल नेता अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में प्रस्तुत होला रणनीति। सेपटे संसदीय व्यापार मंत्री कहिले विरोधी को कराजिब काउंटर। बुल्ला भीमस्तार सांघातिक दृश्य। 3 घंटा धरी विद्युत काट। कैंसर रोगी को मोबाइल टॉर्च आलुआरे दिगला केमो। अंधारे कल्पल हेबे कैंसर पेसेंट। जीडी विभाग अवहेला को दायी। कांग्रेस नेता निरंजन पट्टनायक घर चोरी मामला। विजयवाड़ा गिरफ है अभियुक्त स्नाइपर। सुना गहना हीरा टंका सबू जपत। एकुटिया चोरी करिबारे माहिर क्लास स्पाइडर। पुणी समान तरीका मंडपरू गिफ्ट टंका एवं सुना अलंकार चोरी। पुरी मोचीसाही छकरे वकिलों पुओ व्रतघर उत्सव में कलाकना बुलाइला चोर। गिफ्ट मिलिथिबा 2 लाख टंका 5 भरी सुना अलंकार चोरी होइथिबा अभियोग। टाउन थाना रे एतला। रशिया यूक्रेन युद्ध को नहीं आसला बड़ खबर। खूब शीघ्र युद्ध में पड़िबो पूर्णच्छेद। रशिया राष्ट्रपति फोन जोगे घंटाए कथा हेले ट्रम्प। अमेरिकार युद्ध बंद प्रस्ताव में पुतिन राजी।
अमेरिका रे प्रधानमंत्री मोदी विमान बंदर में जोरदार स्वागत। आज राष्ट्रपति ट्रम्प भेटघाट विभिन्न प्रसंग में दुई देशर राष्ट्र नेता मध्य हेब आलोचना। फोकस रे वाणिज्य, प्रतिरक्षा, एआई एवं शुल्क ह्रास प्रसंग। बुलेटिन आरंभ करबा गुरुत्वपूर्ण खबर बुला भीमसा रे सांघातिक दृश्य सामना को आसी। मोबाइल टॉर्च चालू रे कैंसर रोगी को दिया जाइछि केमो। पाखापाखि 3 घंटा धरी विद्युत काट जो रोगी सेवा व्याहत होइछि। जरूरी परिस्थिति रे किछि रोगी को बाध्य होई मोबाइल लाइट रे केमो चिकित्सा दिया जाइथिबार देखबा मिलिछि। आउ ए होइछि आमे टीवी स्क्रीन देखाइबा को चाहिबो पूरा दृश्य किबोली भाबरे 3 घंटा विद्युत काट है रोगी सेवा व्याहत है। मोबाइल टॉर्च चालू रे केमती कैंसर रोगी को दिया जाउछि केमो तापुरी टॉर्च चालू रे तार पूरा दृश्य देखि पारुछंती। 3 घंटा धरी विद्युत काट जो एई भली स्थिति देखिबा मिलिछि एवं आपन को देखाउछु पूरा दृश्य ए होछि तार पूरा दृश्य। जीटी विभाग रो विद्युत काट जो कैंसर रोगी माने बिना लाइट रे 3 घंटा धरी कलबल होइतिबार अभियोग होछि। 3 घंटा काल रोगी को अंधारे रहिबा को पड़िथिला। गतकाली दिन 12 ରୁ 3टा पर्यंत विद्युत सेवा ठप हो जाइथिला। ए विभागटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होइथिले मध्य जीवन सहित संग्राम करुवा अति गुरुतर रोगी माने ए विभाग रे चिकित्सित होउछंती। तेबे कोनोसी सूचना न देई एभली विद्युत काटिबा द्वारा रोगी माने अनेक मात्रा रे हैरान होइतिबा अभियोग होइछि। विद्युत काट काहेकि करा गला ताकु नै कि अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। विद्युत काट करिबा पूर्वरु एठारे थिबा जेनेरेटर मध्य चला जाई नथिला। पूर्वरु किछि रोगींकर केमो चिकित्सा आरंभ होई सारिथिबा परे आउ किछि रोगी को अंधार भितरे मोबाइल लाइट रे बाध्य होई केमो ट्रीटमेंट दिया जाइथिबा आपण जो वीडियो देखुचंती ता वीडियो रे देखिबा मिलिछि। सेपटे ए नै विद्युत विभाग को पचारिबा पई चेष्टा करा जाइथिले मध्य केही फोन उठाई नथिले। सेपटे भीमसार कर्तृपक्ष कहिसंती विद्युत विभाग कोनोसी सूचना न देई विद्युत काटी दैथिले। सेपटे भीमसार रे थिबा जेनेरेटर काहेकि चललनी ताकु नै तदंत करा जिवो बोली भीमसार अध्यक्ष कहिसंती। रोगी को जीवन सहित खेल करा जाउछि, अंधारे दिया जाउछि केमो चिकित्सा करा जाउछि। सांघातिक दृश्य सामना को आसी। बारंबार सबुळे चर्चा रे रहउछि बुला भीमसार। एथरो चर्चा होउछि कोबोली भाबरे अंधार रे कैंसर रोगी को केमो दिया जाउछि तापुरी अंधार रे कोबोली भाबरे चिकित्सा करा जाउछि, ट्रीटमेंट करा जाउछि, जहाकु नै कि अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होउछि। त्रिविक्रम अछंती फोन लाइन रे। त्रिविक्रम, कैंसर पेशेंट को जीवन सहित खेल करा जाउछि, जो माने जीवन सहित संग्राम करूछंती सेठी देखिबा कि बुला भीमसार परी बड़ हॉस्पिटल ले जो बली भाबरे अंधार रे तापणी घंटे की 2 घंटा नुहे 3 घंटा टॉर्च लाइट रे केमो दिया जाउछि। पूरा घटना कोन ये गोटे सांघातिक घटना। को सांघातिक जहा गतकाली घटना ये दिन 12 ରୁ 3ଟା मध्य घटना जहाँ देखा मिलता जेहेतु बुर्ला बड़ मेडिकल रे अन्य व्यवस्था रही जिते विद्युत काट होता है जेनेरेटर व्यवस्था रही किंतु गतकाली जिते कैंसर वार्ड रे दिन 12 ରୁ अपराह 3ଟା पर्यंत विद्युत कटि जाता जहाँ जोगाजोग करते विद्युत आसी नाला। ए समय किंतु कैंसर डिपार्टमेंट मुख्यतः केमो दि जाए और जो रोगी मान को केमो दि जाए से समय निहाती भाव में विद्युत रहा कथा और पार्श्व प्रतिक्रिया किसी रोगी होता है किंतु 3 घंटा धरी कैंसर डिपार्टमेंट जहाँ रहा वार्ड गुड़िक पूरा अंधार रहा एवं रोगी मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन हेले किंतु कहीं एक कटागला जदि जहाँ सूचना रही मेन्टेनेंस जदि कटा जाता जीडी विभाग तरफ तार पूर्व कहीं सूचना दि जाता और ए संपर्क में अधीक्षकों सहित कथबार्ता अधीक्षक कहते केमी जेनेरेटर चल ना तो तदंत किंतु विद्युत विभाग जिते काटी था कौन डाक्तखाना जेहतु ये हूँ खाली पश्चिम ओडिशा नुहे पश्चिम ओडिशा व्यतीत छत्तीसगढ़ और झारखंड अंचल रोगी मैंने बुर्ला बड़ मेडिकल भीमसार उपर निर्भर करते कैंसर रोग एकमात्र ही पश्चिम ओडिशार ये हूँ उच्चतर चिकित्सालय। तो एभली एक अनुष्ठान केमी पूर्व सूचना न दे 3 घंटा विद्युत काट करागला एवं रोगी मैंने हैरान हेले ताहा एबे प्रश्न उठी से यार तदंत ठीक भाव में एडिशनल बैकअप व्यवस्था जेहेतु जेनेरेटर से समय कहीं चलला ना जदि सब वार्ड गुड़िक जेनेरेटर व्यवस्था अच्छी जदि विद्युत काट है जेनेरेटर कहीं चलला ना रोगी मैंने एत हैरान होगा कहीं पड़ा
ए संपर्क में अधिक तदंत किंतु आश्चर्य लगुच त्रिविक्रम जितेबाला एभली स्थिति कहीं ये गोटे केमो विभाग हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग जीवन सहित संग्राम करुवा रोगी एठारे ट्रिटमेंट हुंती किंतु बड़ प्रश्न उठिबा स्वाभाविक कथा विद्युत काट हैला परे दायित्व रे व्यक्ति जेनेरेटर कहीं चलाई नथिले जेनेरेटर थिला कि नहीं ताकू नै कि प्रश्न उठुची एवं किपरि बिना सूचना रे विद्युत काटी दिया गला ताकू नै कि गोटे बड़ प्रश्न मध्ये उठुची देखो जेहेतु जीडी विभाग ये मेंटेनेंस दायित्व नहीं थाए तो किंतु मेंटेनेंस पाई जेते विद्युत काट करा जाय था बहु पूर्व ही सूचना दिया जाता जे ए समय रे विद्युत काट हेबो ता पूर्व मध्ये अन्य विकल्प व्यवस्था करा जाय था किंतु एते बड़ डाक्तरखाना रे गुरुत्वपूर्ण कैंसर विभाग रो जो थी प्रतिदिन नियमावली अनुसार मुख्यतः केमो जो मान को दिया जाए से से रोगी मान को ठीक समय रे ही केमो दिया जाए एवं समय किसी रोगी कथार पार्श्व प्रतिक्रिया देखा दे थाए से समय विद्युत रहा निहाती दरकार किंतु अंधारे जो टर्च लाइट कि मोबाइल लाइट रे केमो दिया जाता तो तेणुक निश्चित भाव में ये गोटे बड़ धरणर जो कहवा आम भूल कौटी रही भूल टी मुख्यतः जदि विद्युत काट करागला कहीं कहगला ना एवं जदि विद्युत काट पर जेनेरेटर व्यवस्था जेनेरेटर करागला ना कहीं ए संपर्क में तो जदिओ अधीक्षक कहते तदंत करा एभली भूल कहीं एभली एक डाक्तरखाना जो पश्चिम ओडिशा केवल नुहे अन्य राज्य पड़ोशी राज्य गुड़िकर रोगी मैंने चिकित्सा बुला भीमसार पर निर्भर करथांती बुला भीमसार कर्तृपक्ष कोन कहउचंती केवल तो कहउचंती विद्युत विभाग कोनोसे सूचना दे विद्युत काटी दैथिले किंतु जेनेरेटर तो रहिथिबो ना जेनेरेटर काहे की चलिलानी ताको ने की मध्य प्रश्नवाची सृष्टि होउची घंटे की 1.5 घंटा नुहे पाखा पाखी 3 घंटा ना से संपर्क रे ही अधीक्षक कहउचंती जे कहीं जेनेरेटर टी चलना ता ऊपर तदंत करा जिवो किंतु बड़ प्रश्न होउची जे एभली के परिस्थिति किभली सृष्टि हैला 3 घंटा धरी गोटे गुरुत्वपूर्ण कैंसर विभाग रे विद्युत काट हैला जेनेरेटर चलना नहीं अंधार रे रही रोगी माने अंधार रे टॉर्च लाइट रे दिया गला केमो दिया गला तेणु निश्चित भाव में यार तदंत हवा आवश्यक जो माने ही दायी एभली एक घटना पाई सेमानक ऊपर कार्यानुष्ठान हवा आवश्यक जो द्वारा कि आगामी दिन में आउ एभली भूल हेबो नाही एवं मुख्यतः रोगी माने हैरान हेबे नहीं रोगी माने चिकित्सा पाई विभिन्न दूर दूरांत को आसुचंती कर्कट रोग कम से कम आशा करिबा दिविक्रम आगामी दिन रे एभली केवल त्रुटि न हो काहेकि ना जो बड़ी भाबरे अंधार भितरे केमो चिकित्सा दिया जाउची वर्तमान जो समय रे जहा को नै कि अनेक प्रश्न बचेबा स्वाभाविक कथा आपण खबर उपरे नजर रखंतु वरिष्ठ कांग्रेस नेता निरंजन पट्टनायक घर चोरी प्रसंग विजयवाड़ा गिरफ होइछि अभियुक्त गिरफ अभियुक्तर ना स्नाइडर तेबे बयस तार 40 वर्ष अभियुक्त स्पाइडर होची विशाखापट्टना रे रहे तबे स्पाइडर पाखरु सुन्ना गहना हीरा टंका ए सबु जब्त करिछि पुलिस बड़ कथा होची कि एकुटिया चोरी करिबारे माहिर थिला स्पाइडर तो बहु दिन परे देखिबा कि जहा को नै कि अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होइथिला एवं बड़ कथा कुआ जाउथिला कि आ पछरे कहार हाथ रहिछि एवं अभियुक्त स्पाइडर को गिरफ करिछि पुलिस सबुटु बड़ कथा होची कि हाई प्रोफाइल चोर ई होची सही हाई प्रोफाइल लुटेरा जे निरंजन पट्टनायक घरु चोरी करिथिला धरा पड़िछि लुटेरा वरिष्ठ कांग्रेस नेता निरंजन पट्टनायक घरु 50 लाख टंकार सुना अलंकार हीरा ए सब चोरी होइथिला एवं निरंजन पट्टनायक घरे कलाकना बुलाइथिबा लुटेरा को कमिशनरेट पुलिस टीम धरिछि एवं राज्य बाहरु लुटेरा को धरिछि एवं ये होछि हाई प्रोफाइल चोर जाके स्पाइडर कुआ जाउछि जे कि एका चोरी करिबारे एकदम माहिर थिला एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता निरंजन पट्टनायक जो आईआरसी विलेज रे नयापल्ली घरु दुई थर चोरी उद्यम होइतिला घरे पसी सीसीटीवी रे पूरा केमती चोर पसितिला तार पूरा कैद होइतिला दृश्य नगद टंका सहित समस्त सुना अलंकार लूट करी झरका बाटर देई लुटेरा फेरार होइतिला पुणी समान तरीके मंडपरू गिफ्ट टंका एवं सुना अलंकार चोरी होछि पुरी मोची साही छकर आईनजीवी स्मृतिरंजन पति पुओ व्रतघर उत्सव में कलाकना बुलाई चोर गिफ्ट मिलिथिबा खाम अलंकार नहीं चोर चंपट मारी 2 लाख टंका 5 भरी सुना अलंकार चोरी होइतिबा अभियोग होइछि एने टाउन थाना रे एतला दिया जाइछि पुलिस विभिन्न दिग को लेकि छानबीन करुछि गत 9 तारिख राति रे पौर संस्था कल्याण मंडप रे आईनजीवी स्मृतिरंजन पति पुओर व्रतघर भोजी थिला बंधु संपर्कियों सह परिवार लोक भोजी रे व्यस्त थिबा बेले जने युवक कौशल क्रमे
टंका खाम अलंकार बैग को नहीं खसी पड़ाई। कार्यक्रम रेकर्ड करा जाउथुबा कैमेरा रे चोरी दृश्य पूरा कैद होइछि। तार पूरा विजुअल मध्ये आपण देखि पारुछंती। फोटो रे से चलप्रचल करुथवार वीडियो फुटेज पुलिस को हस्तांतर करा जाइछि। गत वर्ष बलियापंडा समुद्रकूल थाना अंचल रे 2टी होटेल विवाह उत्सव गिफ्ट टंका बैग एवं सुना अलंकार चोरी होइथिला। मुथूट फाइनान्स प्रस्तुत करुछंती गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन नेबा आउ कस्टमर रिफर करिबा उपरे पांतु सुवर्ण सुजोग। लक्षाधिक मूल्यर गिफ्ट वाउचर जीति भारत तासह जितंतु आपण 24 कैरेट शुद्ध सोना। गोल्ड लोन नेबा पाई आज ही मुथूट फाइनान्स ब्रांच को आसंतु किंबा कॉल करंतु 1-800 313 1212। है इस देश 1984 सिख विरोधी हिंसार एक मामलार कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी साब्यस्त। दिल्लीर स्वतंत्र कोर्ट एही राय सुनाइछंती। आसंता 18 तारिख में कोर्ट सज्जन कुमार प्रति दंड विधान करा जिवो। 1984 नवेम्बर पहिलारे दिल्ली राजेंद्र नगर थिबा एस जसवंत सिंह एवं तांको पुओ एस तुरणदीप सिंह को हत्या करा जायथिला। सज्जन कुमार नेतृत्व में शताधिक लोक राजेंद्र नगर जाई गंडगोल करथिले, हिंसाकांड घटाइथिले बोली अभियोग होइतिला। सामना को आसिला केरल नर्सिंग कॉलेज रो अमानवीय रैगिंग। कोटायम सरकारी नर्सिंग होम रे होइतिबा ए रैगिंग नै एबे सारा देशर चर्चा। प्रथम वर्षर 3 जण छात्रंक प्रति 3 मास धरि निहाती अमानवीय रैगिंग करि चलिथिले नर्सिंग तृतीय वर्षर 5 जण छात्र। रैगिंग शिकार होइतिबा छात्र माने तिरुवनंतपुरम रो थानार अभियोग पर पुलिस संपृक्त 5 जन गिरफ्त करछि। आउ नाहाती अयोध्या राम मंदिर पूज्य पूजक सत्येंद्र दास, लखनऊ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल। आज आरंभ हो विधानसभा बजेट अधिवेशन। प्रथम दिन में गृह में अभिभाषण रखिबे राज्यपाल के हरिबाबू। 2टी पर्यायर हेबाकुथिबा बजेट अधिवेशन एप्रिल 5 तारिख पर्यंत चलिबो। सेपरि प्रथम पर्याय आज आरंभ होई आसंता 21 तारिख एवं द्वितीय पर्याय मार्च 7 रु एप्रिल 5 तारिख पर्यंत चलिबो। ए अधिवेशन में बारवाटी विभ्राट, कणास झाड़ाबांती, आईन श्रृंखला, कटनी चटनी, दरदाम वृद्धि प्रसंग उठाई बीजेपी सरकार को काठगड़ा को टाणिबे विरोधी। ता सहित आईन श्रृंखला स्थिति, कणास झाड़ाबांती, धान कटनी चटनी, दरदाम वृद्धि प्रसंग उठाई बीजेपी सरकार को घेरिबे। सेपरि कांग्रेस उठाइबो कोटिया पोलाभरम प्रसंग। महानदी जल विवाद समाधान हेउनथिबारु ए संपर्क में आलोचना पाई दाबी करिबो बीजेडी। कणास बांकी समेत राज्यर आउ केतेक अंचल रे जल प्रदूषण जोगु जो भली रोग व्याधि व्यापुची से कथा मध्य गृह रे उठाइबे विरोधी। आईन श्रृंखला बिगिड़िबा, बेरोजगारी, ई केवाईसी नारे लोके हंतसंत हेबा कथा उठाई सरकार को अकल में पकाइबाकू योजना करुछि कांग्रेस। सेपटे विधायक दल बैठक में विरोधी को मुकाबला पाई योजना मध्य करिछि बीजेपी। संसदीय व्यापार मंत्री कहते विरोधी गठनमूलक भाव में जो प्रसंग उठाइबे सेथिरे आलोचना पाई सरकार एकदम प्रस्तुत अछंती। आज आरंभ होइछि विधानसभा बजेट अधिवेशन। मोहन सरकार प्रथम पूर्णांग बजेट अधिवेशन में आज मोहन सरकार द्वितीय बजेट उपर नजर रही सरकार को घेरिबा कौन सब रणनीति प्रस्तुत करिसेंती विरोधी। आम सहित महेश नंद सीनियर करेस्पोंडेंट लाइव जोड़ी होइछंती विधानसभा परिसर। महेश, आज विधानसभा बजेट अधिवेशन आरंभ होइछि सरकार को घेरिबा विरोधी की भाव स्ट्राटेजी व रणनीति प्रस्तुत करिसेंती एवं मुकाबला पाई शासक दल किभली भाव में प्रस्तुति करिछि एवं विशेष करिकी बारवाटी प्रसंग कथा कहतु, कणास झाड़ाबांती, कटनी छटनी ए तमाम प्रसंग को लेकिन गृह हुलस्थुल होई पारे कि? देखो राज्यपाल अभिभाषण चलित विधानसभा बजेट अधिवेशन आरंभ हो दिन 11टा समय राज्यपाल अभिभाषण रखिए। राज्यपाल अभिभाषण जितेबाला गृह से सरकार विकास चित्र राज्यपाल अभिभाषण रही है। ये जो राज्यपाल अभिभाषण रखिए, अभिभाषण में किभली भाव में सरकार जो 9 मासर सफलता सफलता को राज्यपाल अभिभाषण में स्थानित कर जो ही आरंभ होता है विधानसभा वितर्क।
ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କାରଣ ଆଜି ଦିନର ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ତାପରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେଇକି ବିଧାନସଭା ଆଜି ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି जो 16 तारिख पर्यंत ये जो चलिबो सेही समय रे ही शासक विरोधी मुहामुही स्थिति को चली आस्थांती एवं 9 मासर सरकार का सफलता कथा जिते शासक दल कही था से सरकार का तमाम विफलता को लेकिन विरोधी शासक दल आड़ को अंगुली निर्देश करते तेणु ये जो विफलता कथा जदि कह ये गोटे लंबा समय अधिवेशन 2टी पर्यायर चलो एवं सेतेबेले जेतेबेले विरोधी जेतेबेले शासक दल को अंगुली निर्देश करेंगे सेतेबेले ये जो कथा गुड़िक जो विधायक दल बैठक में से जो रणनीति स्थिर करते बारबाटी अव्यवस्था कथा कह जो धान मंडी अव्यवस्था कथा कह चाषी को किभली भाव में मंडी धान उठुनी किभली भाव में टोकन मिलूनी चाषी को या भितर सरकार ये जो मंडी बंद करने कि मंडी बंद करने कि बाहर तेणु या आप देखिए ये सब भितर जब आप देखिए ये सब जिनस गुड़ी को विरोधी प्रसंग करेंगे अन्य पक्ष जब आप देखिए जे कांग्रेस बीजेडी जो दुई विधायक दल बैठक रे पृथक पृथक जो विधायक दल बैठक से रणनीति स्थिर कर जो जल पोलाभरम टू नहीं महानदी जो जल समस्या कथा कह आईन श्रृंखला कथा कह बेकारी समस्या कथा कह जदिव बेकारी जो निजुक्ति को सरकार प्राथमिकता देउछंती तेणु गोटे गोटी करके प्रसंग स्थान पाइब और आसंता काली जेहेतु पुणी प्रश्नकाल आरंभ हम तेणु ये प्रश्नकाल ठू नहीं राज्यपाल जो अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आलोचना नहीं प्रत्येक समय जब आप देखिए जे ये शासक विरोधी मुहामुही स्थिति की आसबे देखिए गत जो अधिवेशन होता शीतकालीन अधिवेशन जदि होता जो भाव में गोटे मुहामुही स्थिति आसते कि भाव में लगातार भाव में विधानसभा अचलावस्था देखा मिलता जदिव गतकाली सर्वदलीय बैठक में निष्पत्ति गृह कि सुरखुरी गृह देखा मिल सबुठार गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहीं प्रथम थर सबू कम एथर डिजिटाल विधायक मैंने टैब व्यवहार करेंगे गृह कार्यर सबू तथ्य ये टैब रु मिल विभिन्न बिल आलोचना समय ई भोटिंग सुविधा मिल केमती उत्साहित अच्छा विधायक मैंने निश्चित भाव में कारण पेपरलेस जो विधानसभा पेपरलेस हम कारण तत्कालीन जे बाचस्पति रही सूर्यनारायण पात्र गोटे प्रक्रिया आरंभ होती गतकाली मुख्यमंत्री विधिवत भाव में या जो यार आरंभ उद्घाटन कर जो पेपर हाउस था जो मेंबर मान हाथ को विधायक मान हाथ को कागज देखिए कहते ता बदल में प्रत्येक आसन में टैब लगी टैबलेट लगी जो कथा ता टैबलेट आसो से देखिकी ही पढ़े तेणु ये निश्चित भाव में गोटे जो पेपरलेस बा डिजिटल विधानसभा डिजिटालाइजेशन दिगरे निश्चित भाव में अग्रगति और विधायकों भितर बेस या बेस आग्रह रही इथर जो अधिवेशन टी होची प्रथम थर कि हाउस को पेपर आसबनी ता बदल में टैबलेट जरिया विधायक माने जो वक्तव्य रखा टैबलेट को व्यवहार करेंगे तेणु या नहीं जो कथा कहते विधायक मैंने बेस उत्साहित अच्छा जो विधानसभा जो डिजिटालाइजेशन को लेकिन स्वागत निश्चित भाव में 8 मास नुआ नुआ प्रसंग को नहीं सरकार को घेरिबा को विरोधी गोटेपटे रणनीति प्रस्तुत करथिबा बेले काउंटर करबा को बीजेपी पूरा स्ट्राटेजी प्रस्तुत करुछि तो आज देखिए कि राज्यपाल निजर अभिभाषण रखिए आप महेश खबर पर नजर रखते युद्ध निश्चित बंद हो अमेरिकार आसी रूसिया यूक्रेन युद्ध को नहीं बड़ खबर खूब शीघ्र रूसिया यूक्रेन युद्ध बंद करने को अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप इशारा करते रूस राष्ट्रपति सहित कथा समय युद्ध बंद नहीं पुतिन को कहते ट्रंप पुतिन एकाधिक प्रसंग में फोन में घंटाए कथा होते ट्रंप तेज अमेरिका युद्ध बंद प्रस्ताव में पुतिन सहमति प्रकाश करते पुतिन कहते मु भावुची आमे शांतिर बाट बाहर करिछु शीघ्र युद्ध बंद होगापी पुतिन आग्रही थिबा नहीं सूचना देइछन्ति ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप कथा हेबापरे जेलेन्स्की को फोन करिथिबा कहते रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तेबे अमेरिका आनिथिबा युद्ध बंद प्रस्ताव में रशिया सहित यूक्रेन केते दूर समर्थन करिबो केते सहमति हेबो ताकू नहीं संदेह प्रकट करिसेंति पुतिन अन्यपटे युद्ध बंद को नहीं बड़ कथा कहिछि अमेरिका एवं अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को ओभाल ऑफिस पक्षरु कहा जाइछि
कि आमे चाहूँ आ कौन लोकंर युद्धरे जीवन न जाऊ मु भावुची राष्ट्रपति पुतिन शांति चाहूँगी एवं राष्ट्रपति जेलेन्स्की मध्य शांति चाहूँगी एवं मु मध्य शांति चाहूँगी बोली अमेरिका राष्ट्रपति कहते। ट्रंप एक कथा मध्य कहते पुतिन को मन भितर कौन अच्छी कौन से लोक जानती किंतु मु विश्वास सहित कहबी ए युद्धरे पूर्णछेद पड़ू यह चाहूँगी रूसिया राष्ट्रपति एवं आमे से दिगरे काम आरंभ करिछु खूब शीघ्र एने पदक्षेप नियाजिबो। भारत प्रधानमंत्री पर साउदी अरब राष्ट्रमुख्यों सहित साक्षात आलोचना करेंगे ट्रंप से समय रशिया यूक्रेन युद्ध बंद प्रस्ताव में स्थायी मोहर बाजिबार संभावना अच्छी। आपण जानते फेब्रुआरी 2022 रे रशिया यूक्रेन युद्ध आरंभ होइथिला। अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में पहुंचवा पर मोदी को जोरदार स्वागत करा जायछि। 2 दिन अमेरिका गस्तरे जाइथिबा पीएम मोदी आज अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साक्षात करि पारंती एवं द्वितीय थर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति भाव में शपथ नेबा पर आज प्रथम थर पई ट्रंप को भेटिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी को स्वागत करबा पई अपेक्षा करि रहिछि व्हाइट हाउस। विभिन्न प्रसंग में दुई देशर राष्ट्रनेतांक मध्य द्विपाक्षिक आलोचना हेबा विशेष करके वाणिज्य प्रतिरक्षा एआई टैरिफ वृद्धि एवं अनुप्रवेशकारी प्रसंग आलोचना होई पारे। अतिरिक्त शुल्क ह्रास सह लढुआ विमानयान क्रय चुक्ति को चूड़ांत रूप मिल पारे। मोदी गस्त दुई देश मध्य संपर्क को आहुरी मजबूत करने नहीं आशा करा जाउछि। मोदी ट्रंप भेटघाट उपरे सारा विश्वर नजर रखिछि। विजिलेंस जाल एडीईओ एस पार्थसारथी विषय तेज पार्थसारथी घर समेत 7टी स्थान में रेड जारी रही। कोरापुट जिला कोटपाड़ एडीईओ होती पार्थसारथी अकाउंट्स कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पार्थसारथी घरे चढ़ाऊ कर बोरीगुमा चांपिया स्थित घरे विजिलेंस पक्ष रेड कर पार्थसारथी भाई संपर्क घरे रेड कर चांपिया काजू प्रोसेसिंग यूनिट रे रेड होइछि। 2 एडिशनल एसपी 4 डीएसपी 6 इंस्पेक्टर ए चढ़ाऊ रे सामिल होइछन्ती। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे चढ़ाऊ करा जाउछि। विजिलेंस सेल रे एडीईओ एस पार्थसारथी विषय गोटे गाँ किंतु दुईटी जिला जिले रही नाचेडीही झारसुगुड़ार सिंहभाग अवशिष्टांश सुंदरगढ़ जिले में समन्वय अभाव अटकी जाइछि गाँर सामग्रिक विकास। बैंक ऋण पर नाके दम होउचंती लोके। 2 जिले में बांटी होइथिबारु नाचेडीही गाँ को गड़ुनी सरकारी बस। बहु सरकारी योजना वंचित होउछंती गाँ लोके। लोकंकर घर झारसुगुड़ा जिले में किंतु चाष जमी अच्छी सुंदरगढ़ जिले में। गोटे पोखरी ताहा मध्य उभय जिले में फल पुनरुद्धार काम एकदम ठप हो पड़ी। झारसुगुड़ा किरमिरा ब्लॉक सुलेही पंचायत ये हूँ नाचंडीही गाँ लोकंकर गोटे दाबी सेमानकु जे कोनोसी गोटे जिले में मिसा जाऊ। गोटे गाँ हेले जिला सीमारेखा हो जाइछि 2 भाग। फाळे रही झारसुगुड़ा आर फाड़क सुंदरगढ़ जिले में। एपटे दांड सेपटे बाड़ी कांथ को कांथ लगी दुआर मुह भी पाखापाखि। पर्वपर्वाणी जानीजात्रा बाछ विचार नहीं। सभिए एकाठी होउछंती मौज मजलिस करुछंती। भौगोलिक मानचित्र बांटी पारिनी गाँ लोकंकु हेले एभली अजब सीमारेखा पालटिछि अभिशाप। 2 जिला मझिरे फसी जाइछंती गाँ लोके। थाना जमीजमा विवाद ठारू आरंभ करी बैंक पाई तहगंज होउछंती। उभय जिला प्रशासन प्रश्न मध्य समन्वय अभाव सामग्रिक विकास हो पारनथुवा अभियोग करछंती नाचेंडीही गाँ लोके। किरमिरा ब्लॉक मुख्यालय ठारू 17 किलोमीटर एवं सुलेही पंचायत मुख्यालय ठारू 5 किलोमीटर दूर में रही नाचेंडीही गाँ। सुंदरगढ़ जिला मुख्यालय ठारू दूरता प्राय 18 किलोमीटर। गाँव में रुहंती 70 ऊर्ध्व परिवार। भोटर संख्या 310। झारसुगुड़ा पटे 240 सुंदरगढ़ पटे रहउछंती 70 भोटर। झारसुगुड़ा पार्श्वर घर करथिबा लोकंक जमीबाड़ी सुंदरगढ़ जिला सीमारे एवं सुंदरगढ़ पटे रहउथुवा लोकंक जमीबाड़ी झारसुगुड़ा रे अछि। थाना फांडी को नहीं समस्या किछि कम नाही। सीमा विवाद को नहीं भस्मा थाना और लईकेरा थानार बागडी फांडी पुलिस मध्य दोष लदालदी साधारण कथा। खाली सेतिक नुहे
गाँ पार्श्वर थिबा पोखरीटी दुई जिल्लार सीमा द्वारा दुई भाग होई रहिछि। झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिला प्रशासन मध्य दोष लदालदी कारण यह पोखरीर विकास हेउनाही, जहाकु नै ग्रामवासी मध्य प्रबल असंतोष। सेटा दुही डिस्ट्रिक्ट रो मुड़ा है, झारसुगुड़ा भी है अधा और सुंदरगढ़ रो अधा है। सेटा मुड़ाटा केभे कूड़ा कुड़ी केभे नहीं हेबार आ मुड़ाटा होचे 17 एकड़ 12 डिस्ट्रिक्ट आउ यार गवर्नमेंट यार सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाला करबार नहीं कि झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट काम नहीं करो। बोलर जगह है बोली सियाड़ू लक्ष्मी बस्ती आबार सियाड़ू भी बस आबार कि याड़ू भी बस्ती आबार हम के जिमु आम के बहुत असुविधा झारसुगुड़ा आड़ वाली नहीं करबार कि सुंदरगढ़ दिन नहीं करबार मुड़ाटा इदी अच्छे मुड़ाटा सुंदरगढ़ आड़ू है और इदी अच्छे झारसुगुड़ा आड़ू है मजीती पैटे पड़ी। जिला विभाजन पूर्व 1994 जाए संबलपुर सुंदरगढ़ सीमार थिला एही गाँ। दुई जिलार व्यवस्था आईन कानून भितर पेशी होउथिले लोके। संबलपुर विभाजन होई झारसुगुड़ा जिला मान्यता पाइबार 30 वर्ष बीतिलाणी, हेले बदलिनी नाचेंडी गाँर भाग्य। सेतेबेले गाँ लोके फसिथिले संबलपुर सुंदरगढ़ जिला सीमारे, एबे फसिछंती झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ जिला मध्यरे। सरकारी बस सेवा क्षेत्र में अनुरूप समस्या सृष्टि होछि। पूर्व सरकार समय आरंभ होइतिबा लक्ष्मी बस सेवारू बाद पड़ी नाचेंडी, कारण आश्चर्यचकित कला भली। गाँ दुई जिले में बांटी होई रहिथिबारू एथिलागि अनुमति नाही। नुआ सरकार रे मध्य समस्यार समाधान होई पारिनी, लोके सुलभ गमनागमनरू वंचित होउथुबा कहिसथि। जमी बाड़ी सब सुंदरगढ़ रे घर अच्छे झारसुगुड़ा तो आमके जमी जैसे लोन फोन करवार पड़वा कि काना दरकार जदि लैंप्स धान दबार अच्छे सब सुंदरगढ़ तहसील जीवार असुविधा। इे हमर डॉक्यूमेंट अच्छे झारसुगुड़ा रे सेडे जमी अच्छे सुंदरगढ़ रे तापय सब असुविधा होचे। मु झारसुगुड़ा लोक हैं किंतु वो जमीन बाईटा अच्छे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट थी से बैंक जमी पट्टा आउ आधार कार्ड मैच नहीं हेले अपन कौन सी प्रकार सुविधा देवे के सेटा असुविधा जीवार आबार भी हमर तमाने असुविधा होचे। दुईटी जिलार सीमारे रहिथिबा नाचेंडीर गाँ लोक माने ना ए जिलार होई पारछंती ना से जिलार। सामग्रिक विकास रु बाद पड़छंती एही गाँर लोके। सेमानकर गोटिए दाबी सेमानंकु गोटिए जिले में अंतर्भुक्त करा जाऊ। झारसुगुड़ारू जितेंद्र देवता, न्यूज 18 ओडिया। उन्नीस 1984 सिख विरोधी हिंसार एक मामलें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी साब्यस्त। दिल्लीर स्वतंत्र कोर्ट यह राय शुणाई। आसंता 18 तारिख में कोर्ट सज्जन कुमार प्रति दंड विधान करा जिवो। 1984 नवेम्बर 1 दिल्ली राजेंद्र नगर में एस जसवंत सिंह एवं तांको पुओ एस तुरणदीप सिंह को हत्या करा जायथिला। सज्जन कुमार नेतृत्व में शताधिक लोक राजेंद्र नगर जाई गंडगोल करथिले, हिंसाकांड घटाइथिले बोली अभियोग होइतिला। सामना को आसिला केरल नर्सिंग कॉलेज अमानवीय रैगिंग। कोटायम सरकारी नर्सिंग होम रे होइतिबा ए रैगिंग नै एबे सारा देशर चर्चा। प्रथम वर्षर 3 जन छात्रंक प्रति 3 मास धरी निहाती अमानवीय रैगिंग करि चलिथिले नर्सिंग तृतीय वर्षर 5 जन छात्र। रैगिंग शिकार होइतिबा छात्र माने तिरुवनंतपुरम रो थानार अभियोग पर पुलिस संपृक्त 5 जन गिरफ्त करछि। आउ नाहाती अयोध्या राम मंदिर पूज्य पूजक सत्येंद्र दास, लखनऊ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज और हॉस्पिटल रे चिकित्सा बेले तांकर मृत्यु होईछि। तांकु 83 वर्ष बयस होइतिला। स्वास्थ्यगत समस्या देखा देबारु गत 3 तारिख रे तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिला। से उच्च रक्तचाप, मधुमेह एवं स्नायुविक रोग रे पीड़ित थिले। 20 वर्ष बयसरु संथ जीवन आरंभ करथिले सत्येंद्र दास। गाजा रे अमेरिकार राज ही चलिबो। गाजा ही हेबो अमेरिकार आउ एक अंश विशेष। गाजा प्रसंग में पुणी एमिति दोहराई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। व्हाइट हाउस रे जॉर्डन राजा अब्दुल्ला द्वितीय साक्षात आलोचना पर सांबादिक मानकु यह कहते राष्ट्रपति ट्रम्प। गाजा को भिन्न शैली में विकसित करा जिवो। अमेरिका गाजा को विकसित करबा परे मध्य प्राच्यर लोके ही सेठारे रहिबे बोली कहते ट्रम्प। दुर्नीति तालिकार आउ 3 पाद तलकू खसिला भारत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तथ्य अनुसार 180 देशर तालिकार गत वर्ष भारत 93तम स्थान में थिला। एथर 96 नंबर स्थान को खसी। तालिकार टॉप रे अर्थात 180 नंबर स्थान रही दक्षिण सुदान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तथ्य अनुसार दक्षिण सुदान ही विश्वर सबुठारु दुर्नीतिग्रस्त देश। डेनमार्क ही विश्वर सबुठारु कम दुर्नीतिग्रस्त देश।
अपार्टमेंट पंजीकरण संपर्कित विज्ञप्ति उपरे अंतरीण स्थगितादेश जारी करछन्ति हाईकोर्ट। गृह नगर उन्नयन विभाग पक्षरु 2023 मसिया जारी होइतिबा एही विज्ञप्ति उपरे स्थगितादेश जारी करछन्ति हाईकोर्ट। 2017 मसिया पूर्व निर्माण शेष होइतिबा अपार्टमेंट पंजीकरण उपरे लागू हेबो नाही राज्य सरकारक पक्षरु कुहा जायथला। हेडलाइंस रो प्रायोजक मजबूती का वादा मंगलम टैंक्स एंड पाइप्स। पुल्ला भीमसारे सांघातिक दृश्य 3 घंटा धरी विद्युत काट कैंसर रोगी को मोबाइल टॉर्च आलुओरे दियागला केमो अंधार रे कलबल हेबे कैंसर पेशेंट जीडी विभाग अवहेला को दायी। आज विधानसभा बजेट अधिवेशन प्रथम अभिभाषण रखिबे राज्यपाल 17 आगत हेबो राज्य बजेट। शासक दल को घेरिब विरोधी बीजेडी विरोधी दल नेता अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक में प्रस्तुत होला रणनीति। सेपटे संसदीय व्यापार मंत्री कहिले विरोधी को कराजिबो काउंटर। कांग्रेस नेता निरंजन पट्टनायक घर चोरी मामला विजयवाड़ारू गिरफ है अभियुक्त स्पाइडर। सुना गहना हीरा टंका जबत एकोटिया चोरी करिबारे माहिर थिला स्पाइडर। रूसिया यूक्रेन युद्ध को नहीं आसिला बड़ खबर। खूब शीघ्र युद्ध में पड़ब पूर्णच्छेद। रूसिया राष्ट्रपति फोन जोगे घंटाए कथा हेले ट्रंप। अमेरिकार युद्ध बंद प्रस्ताव में पुतिन राजी। अमेरिका रे प्रधानमंत्री मोदी विमान बंदर में जोरदार स्वागत। आज राष्ट्रपति ट्रंप भेटघाट विभिन्न प्रसंग में दुई देशर राष्ट्रनेता मध्य हेब आलोचना। हेडलाइंस रो प्रायोजक मजबूती का वादा मंगलम टैंक्स एंड पाइप्स। नमस्कार, चलंतु आरंभ करबा आज स्पेशल रिपोर्ट। कथा कहिबार शैली एवं शालीनता मनीष को उत्तम करिथाए, किंतु मनीष आधुनिक हेबार निशारे जदि निजर शालीनता एवं संस्कार हराई बसे तेबे कौन हेबो? आज्ञा हाँ, एमिति एक घटना को नहीं एबे सारा देश में जोरदार चर्चा। यूट्यूबर तथा पॉडकास्टर रणबीर अलावादिया तांकर पॉडकास्ट शो को अनेक नेता मंत्री ठारू नहीं अनेक कलाकार एवं अनेक वर्गर मान्यगण्य व्यक्ति अतिथि भाव में जाइछंती। एबे से रणबीर एक शो रे एमिति अभद्र टिप्पणी रखिछंती जहाँ तांकर इमेज को अग्ली कर देछि। हाटरे पड़ी दांडरे गड़िबा परे एबे मामला जाई पहुंची काठगड़ारे। विपथगामी युवगोष्ठी डार्क कॉमेडी नारे अश्लीलतार प्रचार, गंदी बात बड़ एक्शन। असभ्य टिप्पणी देई प्रसिद्ध यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणबीर अलावादिया एवं तांको बंधु समय रायना इंडियाज गॉट टैलेंट रे हसुछंती। एमिति एक कंटेंट जहां आमे आपनकु सुनाई परिबु नाही, किंतु वीडियो वायरल होईछि। लोकमाने रागरे पाची लाल होई जाइछंती और रणबीर अलावादिया और तांको बंधु समय रायनांको विरोध रे एक्शन नेबाकू उठिछि दाबी। रणबीर अलावादिया ओरफ बियर बाइसेफ एवं इंडियाज गॉट टैलेंट रो होस्ट समय रायनांको अड़ुआ बढ़ी, कारण उभय शो समय रे अश्लीलतार प्रचार करिथिबा अभियोग होईछि। हमारा देश है वो संस्कृति का देश है, जहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, संसार देवो भव। इस तरीके के कल्चर में जीने वाले हम लोग हैं और कला का आकार जहाँ समंदर की माप समाप्त हो जाती है, वहाँ से कला का उद्गम शुरू होता है। क्यों? कला हवा में रहती है। कला सृजनशीलता का प्रस्तुतिकरण है, जिसमें बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, सबकी बाँछें खिल जाती हैं, सबका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है।
ऐसे वीडियो पहले भी बहुत सारे देखे हैं। इस तरीके के वीडियो देख देख के शर्म आती है। ऐसा लगता है कि ये सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में ये क्या होता जा रहा है हमारी युवा जनरेशन को। इसमें इस तरीके के लोग जो हैं वो अपने माँ बाप को भी अब नहीं छोड़ते हैं। इनके मुंह में बड़ी सड़ाइंद आती है, जिससे जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए ऐसे वीडियोस की, उतनी कम है। अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऑडियंस बेचारी एंजॉय कर रही है। हम श्योर उनके फैंस काफ़ी होंगे और काफ़ी फैंस को ये शो पसंद भी है। तो या तो ये शो सिर्फ उनके लिए ही हो जो आपका शो पसंद करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि सामने आप रील चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, तो ये सारा ही उनका एपिसोड आ जाता है जहाँ पे बहुत सारी वो गालियाँ देते हैं। और एक लड़की भी उसमें थी, उसका नाम नहीं मुझे पता, वो भी बहुत गालियाँ दे रही है, गंदे गंदे वर्ड बोल रहे हैं। इट्स ओके, तुम्हारा शो है, एंटरटेनिंग है, पर इनको रोक लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए जो इन बच्चों को समझाए कि बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा स्टॉप करो, थोड़ा सा रुको। चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी आई एम श्योर बहनें होंगी, कजन्स होंगे, रिश्तेदार होंगे जो उनको स्टॉप कर सकते हैं। तो इन लोगों को रोकने के लिए आपका फर्ज बनता है, आप नोटिस भेजते हो, इनको बोलो यार, प्यार से बोलो कि बेटा ये काम मत करो। अभियोगकारी अक्षित सिंह सूचना और प्रसारण मंत्रालय निकटरे अभियोग करिसेंती। एहा परे मंत्रालय पक्षरु एहाकु गुरुतर सह निया जाइछि। डेपुटी सचिव अमरिंद्र सिंह को स्वर निर्मातांक विरोध रे आवश्यक कार्यानुष्ठान नेबाकु निर्देश दिया जाइछि। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मध्य एही मामला को गुरुतर सह नैछंती। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। चारियाडू निंदा कराजिबा परे वीडियो जारी करी भूल मागिछंती रणबीर अल्लावदिया। सुनंतु कोन कहिछंती से। शनिवार यह वीडियो यूट्यूब रे अपलोड हैला, जोंथिरे रणबीर अल्लावदिया बापा मां को नहीं करिथिले अभद्र टिप्पणी। एमिति एक टिप्पणी जहाँ जे केही सुनिले भी रागरे पाची लाल होई जिवो। सेथिपई यह वीडियो देखिबा परे रणबीर अल्लावदिया को लोकमाने सोशल मीडिया रे प्रबल ट्रोल करुछंती। यह सो डार्क कॉमेडी नारे अश्लीलतार प्रचार करुथबा अभियोग होईछि। तेबे विवाद आरंभ हेबा परे रणबीर अल्लावदिया को पॉडकास्ट को बॉयकॉट करुछंती जणे परे जणे कलाकार। ये ऐसा मजाक है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ऐसे बेहुदा शो देख नहीं सकते, और पूरा देश जो है आश्चर्यचकित है कि ये क्या है। ये इसे ह्यूमर कहते हैं, इसे मजाक कहते हैं, इसे हंसाना कहते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ कसूर हमारा भी है कि कई सालों से हम सहते आ रहे थे ये सब। ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं काफ़ी चल रहे हैं जहां पे
खुलेआम गालियों का इस्तेमाल होता है, बेशर्मी होती है, बेहयाई होती है। हम खामोश थे आज तक, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, आ गए, लोगों ने इसको नोटिस किया और इसके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई शुरू हो गई है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में सवाल किए गए हैं और प्रशासन अपनी हरकत में आ गया है। जो भी है बहुत गलत है। आई डोंट एग्री इट एंड आई डोंट सपोर्ट इट आल्सो। प्रश्न उठुछि जे एभली हरकत पई कोन रहिछि आईन। भारतीय न्याय संहितार धारा 294 सही लोकमानंकु दंडित करे जे माने बही पेंटिंग आदि सामग्री बिक्री करिथांती किंबा किनिथांती, विज्ञापन रु लाभ पाइथांती। सेहीपरि इलेक्ट्रोनिक रूपरे जेकोसी सामग्री मध्य सामिल अछि। एथिरे 2 वर्ष पर्यंत जेल दंड एवं 500 टंका जरिमाना होई पारे। प्रथम थर अपराध करुथुबा व्यक्ति को 5000 टंका जरिमाना देबाकु पड़िथाए। सेहीपरि अश्लील सामग्री को ऑनलाइन ले प्रसारित बा प्रकाशित करिबा द्वारा सूचना और प्रजुक्ति विद्या आईन 2000 रो धारा 67 अनुसार दंड विधान करा जाई परिबो। पहली बात तो ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि कानून है भारत का और सख्त कानून है। भारत की एक मर्यादा है, भारत की एक संस्कृति है, भारत का एक परिवेश है, यहाँ का एक रहन सहन है, हमारे माता पिता, हमारी बोलचाल, हम लोग का एक इतिहास कई हजार साल पुराना। उसको आके आप चंद कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए या शॉर्ट फेम लेने के लिए, अचानक आप पॉपुलर होने के लिए व्यस्त आज विधानसभा बजेट अधिवेशन आरंभ होती देखिपुं विधानसभा परिसर सीधासलख दृश्य देखिपुं गृह को किसी समय पर राज्यपाल के हरिबाबू संबोधित करेंगे पूर्व जो भाव में समस्त पहुंचा आरंभ कर विधानसभा परिसर आप सीधासलख दृश्य देखिपुं समस्त विधायक मंत्री पहुंची सारे सेहीपरि अनेक विधायक माने पहुंची सारे गृह को संबोधित करेंगे। राज्यपाल हरिबाबू के हरिबाबू निजर प्रथम अभिभाषण रखिए के हरिबाबू निजर प्रथम अभिभाषण में कौन कहे जहाँ पर नजर रही बड़ कथा हो कि दिन 11 जो कार्यक्रम था राज्यपाल अभिभाषण गृह कार्य आरंभ होपर दिवंगत पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्वतन विधायक विजय महांती एवं सदन नायकों उद्देश्य शोक प्रस्ताव को गृह में मुख्यमंत्री आगत करेंगे। यह अधिवेशन में विभिन्न प्रसंग में सरकार को घेरिबे बीजेडी और कांग्रेस। 8 मास नुआ नुआ प्रसंग को नहीं सरकार को घेरिबा को गोटेपटे विरोधी निजर स्ट्राटेजी बा रणनीति प्रस्तुत करुवा बेले काउंटर करने को बीजेपी पूरा स्ट्राटेजी प्रस्तुत करुच्ची। आज विधानसभा बजेट अधिवेशन एवं सरकार को घेरिबा को विरोधी पूरा तैयार अच्छा। राज्यपाल अभिभाषण किसी समय पर आरंभ होगा जाऊँगी, गृह कार्य आरंभ होपर देखा कि समस्त नजर रोचे केमती रोचे गृह कार्य। बड़ कथा कि जितेबाला मोहन सरकार प्रथम पूर्णांग बजेट अधिवेशन में मोहन सरकार कर ये द्वितीय बजेट यापर बजेट अधिवेशन में सरकार को घेरिबा को रणनीति प्रस्तुत कर विरोधी विशेष करके धान मंडी बारबाटी आईन श्रृंखला प्रसंग में सरकार को घेरिबा को विरोधी योजना कर। तो आज विधानसभा बजेट अधिवेशन पूर्व जो भाव में विधानसभा जनक पर जड़े विधायक पहुंचा आरंभ कर देखिपुं विधानसभा परिसर सीधासलख दृश्य देखिपुं जनक पर जड़े पहुंची संसदीय व्यापार मंत्री पहुंचले मुकेश महालिंग पहुंची आम देखा पूरा सीधासलख दृश्य देखा गृह को संबोधित करेंगे राज्यपाल
एवं राज्यपाल पहुंची गार्ड ऑफ ऑनर दिया जिवो राज्यपाल पहुंची आपण देखि पारुछंती विधानसभा परिसर सीधा सड़क चित्र देखि पारुछंती राज्यपाल सुरमा पढ़ी बाचस्पति सुरमा पढ़ी वर्तमान समय पहुंची सुरमा पढ़ी बाचस्पति वर्तमान समय पहुंची आपने देखुं बाचस्पति सोरमा पाढ़ी पहुंची सारे और राज्यपाल किसी समय भितर पहुँचे तो आज जो बजेट अधिवेशन आरंभ होता पूर्व कोभली भाव में समस्ते जनक पर जड़े पहुंचुंट पूरा चित्र देखिपुंट प्रथम अधिवेशन आज आरंभ हो फेब्रुआरी 21 तारीख पर्यंत चलो 17 तारीख में उपस्थापन हो राज्य बजेट और 29 तारीख में व्यय मंजूरी बिल से द्वितीय पर्याय अधिवेशन मार्च 7 आरंभ हो एप्रिल 5 तारीख पर्यंत चलो। आज प्रथम दिन में राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति के हरिबाबू निजर अभिभाषण रखिए तेज दुईटी पर्यायर 28 दिन कार्य दिवस रही। मोहन सरकार ए द्वितीय बजेट रे विरोधी बारबाटी लाइट बंद प्रसंग उठाई पारती सेहीपरि बजेट रे सरकार कौन नुआ घोषणा करेंगे समस्त नजर रही। तेज बजेट अधिवेशन गतकाली आप जानते विधानसभा परिसर में सर्वदलीय बैठक होती बाचस्पति सुरमा पाढ़ी अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में मुख्यमंत्री मोहन मांझी उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक कांग्रेस विधायक रामचंद्र काडाम प्रमुख उपस्थित थे। गृह कार्य को समस्त को सहयोग करने को बाचस्पति अनुरोध कर विधानसभा परिसर आपण पूरा चित्र देखिपुंट किसी समय भितर राज्यपाल पहुंचे और निजर अभिभाषण रखिए। राज्यपाल अभिभाषण आज गृह कार्य आरंभ हो अनेपटे विधानसभा अधिवेशन पूर्व बसी बीजेपी बीजेडी कांग्रेस विधायक दलर बैठक राज्य सरकार को घेरिबा को गतकाली स्ट्राटेजी रणनीति प्रस्तुत करिसेंती बीजेडी कांग्रेस। धान किणारे कटनी छटनी रेल अनुदान क्षेत्र में ओडिशा को अवहेला राज्य को आईन श्रृंखला परिस्थिति और नारी निर्यातना प्रसंग बीजेडी उठाइब सेहीपरि कांग्रेस निजर रणनीति करिछि आउ एहाकु काउंटर करने को भारतीय जनता पार्टी व राज्य सरकार निजर स्ट्राटेजी करिसेंती। संसदीय व्यापार मंत्री कहिसेंती कि विरोधी जो प्रसंग उठाइबे तार मुकाबिला और सबु प्रकार प्रसंग आलोचना पई शासक दल पूरापूरी प्रस्तुत रही। प्रथम थर पई एथर सबू काम डिजिटाल हेब विधायक माने टैब व्यवहार करेंगे। गृह कार्य सबू तथ्य टैब में मिल विभिन्न बिल आलोचना समय ई भोटिंग सुविधा मिल प्रथम थर पर दृश्य सामना को आसब और टैब व्यवहार करेंगे। तो बड़ कथा कि जितेबाला बीजेडी आईन श्रृंखला नारी निर्यातना को मुख्य प्रसंग कर सहित चाषी धान मंडी अव्यवस्था कटनी छटनी प्रसंग उठाई शासक दल को घेरिब। कांग्रेस बारबाटी अव्यवस्था ता सहित निर्वाचन प्रतिश्रुति आदि को गृह में प्रमुख प्रसंग करें। शासक बीजेपी 8 मास सरकार सफलतार सहित विकसित ओडिशा गठन को गृह में रखिब। महेश आम सहित विधानसभा परिसर सीधा सड़क लाइव जोड़ी होती महेश जनक पर जने समस्ते पहुंचुंटी एवं आज बजेट अधिवेशन आरंभ होगा जाऊँगी राज्यपाल केतबेले पहुंचे पूरा चित्र कौन देखुंट देखो जी आप किसी समय अपेक्षा या भर राज्यपाल पहुंचे बाचस्पति पहुंची सारी बजेट अधिवेशन जो प्रथम दिन रही प्रथम दिन राज्यपाल अभिभाषण बजेट अधिवेशन आरंभ होता है राज्यपाल को जो समाज से जो गार्ड ऑफ ऑनर देवाई विधानसभा परिसर स्वतंत्र व्यवस्था कर देखुं कि भाव में तार व्यवस्था कर जो जहाँ रही 10:55 राज्यपाल पहुंचे यापर 11टा समय राज्यपाल जो गृह भितर अभिभाषण रखिए ये जो राज्यपाल जो अभिभाषण जदि आप देखिए राज्यपाल अभिभाषण ये सरकार जो सफलता कथा राज्यपाल अभिभाषण से कहे अन्य पक्षे जदि आगामी सरकार योजना कौन रही से संपर्क में राज्यपाल अभिभाषण प्रतिफलित हो जदि देखा जो
ई लंबा समय अधिवेशन 2टी पर्यायर चलो 17 तारिख में बजेट आसो जब आप देखिए विधानसभा जो राज्यपाल अभिभाषण जो धन्यवाद प्रस्ताव नहीं जो आलोचना हम से समय जो गृह जब आप देखिए सरगरम राज्यपाल पहुंचे आम गोटे छोट ब्रेक नहीं जाऊँ खूब शीघ्र फेरवा। उन्नीस 1984 सिख विरोधी हिंसार एक मामलें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी साब्यस्त दिल्लीर स्वतंत्र कोर्ट यह राय शुणाई। आसंता 18 तारिख में कोर्ट सज्जन कुमार प्रति दंड विधान कर 1984 नवेम्बर 1 दिल्ली राजेंद्र नगर में एस जसवंत सिंह एवं तांको पुओ एस तुरणदीप सिंह को हत्या कर सज्जन कुमार नेतृत्व में शताधिक लोक राजेंद्र नगर जाई गंडगोल करथिले हिंसाकांड घटाइथिले बोली अभियोग होइतिला। सामना को आसिला केरल नर्सिंग कॉलेज रो अमानवीय रैगिंग कोटायम सरकारी नर्सिंग होम रे होइतिबा ए रैगिंग इंडिया। उन्नीस 1984 सिख विरोधी हिंसार एक मामलें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी साब्यस्त दिल्लीर स्वतंत्र कोर्ट यह राय शुणाई। आसंता 18 तारिख में कोर्ट सज्जन कुमार प्रति दंड विधान कर 1984 नवेम्बर 1 दिल्ली राजेंद्र नगर में एस जसवंत सिंह एवं तांको पुओ एस तुरणदीप सिंह को हत्या कर सज्जन कुमार नेतृत्व में शताधिक लोक राजेंद्र नगर जाई गंडगोल करथिले हिंसाकांड घटाइथिले बोली अभियोग होइतिला। सामना को आसिला केरल नर्सिंग कॉलेज रो अमानवीय रैगिंग कोटायम सरकारी नर्सिंग होम रे होइतिबा ए रैगिंग नहीं एबे सारा देशर चर्चा। प्रथम वर्षर 3 जन छात्रंक प्रति 3 मास धरी निहाती अमानवीय रैगिंग करि चलिथिले नर्सिंग तृतीय वर्षर 5 जन छात्र रैगिंग शिकार होइतिबा छात्र माने तिरुवनंतपुरम रो थानार अभियोग पर पुलिस संपृक्त 5 तो आज बजेट अधिवेशन आरंभ होउछि। राज्यपाल किछि समय पर के हरिबाबू पहुंचबे निजर गृह में प्रथम अभिभाषण रखिए राज्यपाल अभिभाषण गृह कार्य आरंभ हो एथर केमती रही पड़े गृह कार्य तापरे समस्त को नजर रही आप जानती गत जुलाई रे नुआ सरकार बजेट अधिवेशन हो कि डिसेम्बर शीत अधिवेशन ए दुईटी अधिवेशन विरोधी बीजेडी और कांग्रेस सरकार को घेरवा चेष्टा करथिले। अन्यपटे पूर्व सरकार दोष दुर्बलता को सामना को आनी बीजेडी को निशाना करथिले बीजेपी विधायक एथर केमती रही पड़े गृह कार्य एवं बजेट अधिवेशन में किभली गृह सुरुखुरु चलिबो सेथिपई बाचस्पति अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में आलोचना होइछि। तो आज प्रथम दिन में राज्यपाल अभिभाषण पर 17 तारिख में 2025-26 वर्ष पर बजेट उपस्थापन हेबो। गृह कार्य सुरुखुरु चलाइबाकू समस्त सहयोग लोड़िछंती बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। एथर विधानसभा बजेट अधिवेशन सरगरम होई परे शासक दल को घेरवा बीजेडी कांग्रेस पक्षर स्ट्राटेजी व रणनीति प्रस्तुत कर 9 मास सरकार को विभिन्न प्रसंग में जवाब मागिबे विरोधी एवं अन्यपटे काउंटर अटैक प्रस्तुत रही शासक दल। एथर विधानसभा बजेट अधिवेशन में विरोधी बीजेडी कांग्रेस उठाइबे बारबाटी फ्लड लाइट विभ्राट प्रसंग ता सहित आईन श्रृंखला स्थिति कणास झाड़ाबांती धान कटनी चटनी दरदाम वृद्धि उठाई बीजेपी सरकार को घेरी पारती। कांग्रेस निजर रणनीति प्रस्तुत करिछि कोटिया पोलाभरन प्रसंग उठाइब महानदी जल विवाद समाधान हेउनथिबारु ए संपर्क में आलोचना दाबी करिपारे बीजेडी। कणास बांकी समेत राज्यर आउ केतेक अंचल में जल प्रदूषण जो जो भाव में रोग व्याधि व्यापुची से प्रसंग गृह में विरोधी उठाई पारती पूरा चित्र आप देखिपुंट जनक पर जड़े विधायक मंत्री समस्ते पहुंचुंट विधानसभा परिसर में एवं राज्यपाल के हरिबाबू किसी समय भितर पहुंची जे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गृह में निजर अभिभाषण रखिए राज्यपाल समस्त अपेक्षा रही जमी आपको कहती बड़ प्रसंग सबुठ बड़ प्रसंग भाव में आईन श्रृंखला बिगिड़ा बेरोजगारी ई केवाईसी नारे लोक जो हंतसंत होती ए प्रसंग उठाई सरकार को अकल पकाइबा कांग्रेस जो योजना करुच्ची विरोधी को मुकाबला योजना बीजेपी संसदीय व्यापार मंत्री कहते विरोधी गठनमूलक भाव में
जो सब प्रसंग उठाइबे से आलोचना पई सरकार पूरापूरी प्रस्तुत अछंती। अर्थात आपण जानती ए जो अधिवेशन फेब्रुआरी 13 रु 21 द्वितीय पर्याय मार्च 7 रु एप्रिल 5 तारिख पर्यंत चलिबो। शासक दल ए सबुर मुकाबिला पई पूरा प्रस्तुत रहिछि एवं गृह को सुरुखुरे चलाइबा पई बाचस्पति अध्यक्षतार सर्वदलीय बैठक में मध्य आलोचना होइछि। तो बड़ प्रसंग रही पारे कणास झाड़ाबांती आईन श्रृंखला कटनी छटनी दरदाम वृद्धि बाराबाटी विभ्राट ए सबु तमाम प्रसंग उठाई पारंती विरोधी। तो बजेट अधिवेशन आज विधानसभा बजेट अधिवेशन आज आरंभ होगा जाऊँगी। राज्यपाल किसी सेकेंड भितर पहुंची जिवे राज्यपाल को स्वागत करने समस्ते अपेक्षा गार्ड ऑफ ऑनर दि गृह को पाछोटी गृह में निजर अभिभाषण रखिए। प्रथम अभिभाषण रखिए राज्यपाल के हरिबाबू निजर प्रथम अभिभाषण में हुए तो राज्य सरकार जो सफलतार चित्र ताहा सामना को आनिबे। तो कौन कहते निजर अभिभाषण जहाँ समस्त नजर रही किंतु अनेक प्रसंग में गृह आज सरगरम रही पारे। पूरा चित्र आप देखिपुं विधानसभा परिसर क्यों भाव में रही जनक पर जड़े समस्ते पहुंची सारी गृहर समस्त प्रोसीडिंग विषय में गोटे फिंगर टिप्स से सबकि जना पड़ कहीं एथर सबकि देखा कि जो डिजिटल व्यवस्था प्रथम थर सबू काम एथर डिजिटाल होगा। विधायक मैंने टैब व्यवहार करेंगे गृह कार्यर सबू तथ्य टैब्रु मिल विभिन्न बिल आलोचना समय ई भोटिंग सुविधा मिल तमाम व्यवस्था अर्थात गृह राज्यपाल के हरिबाबू आप देखिपुं वर्तमान समय पहुंची सारी। तो आप देखिपुं वर्तमान विधानसभा परिसर में जनक पर जड़े समस्ते बर्तमान पहुंचुंट बड़ कथा हूँ कि समस्त जो अपेक्षा थिला समस्त जो प्रतीक्षा थिला राज्यपाल केते पहुँचे राज्यपाल वर्तमान समय पहुँची सारी। तो पूरा चित्र गार्ड ऑफ ऑनर दि जावापर राज्यपाल गृह भीतर को प्रवेश करेंगे एवं गृह में निजर अभिभाषण रखिए राज्यपाल। राज्यपाल के हरिबाबू पहुंची सारी गार्ड ऑफ ऑनर दि जाइए गृह भीतर को वर्तमान समय प्रवेश करुँच राज्यपाल निजर अभिभाषण रखिए गृह को संबोधित करेंगे। प्रथम अभिभाषण होउछि राज्यपाल के हरिबाबूंकर प्रथम अभिभाषण में राज्य सरकार जो विकासमूलक कार्य रही गृह में उपस्थापन करिपारंती एवं गृह को संबोधित करेंगे राज्यपाल के हरिबाबू। आप देखिपुं राज्यपाल निजर अभिभाषण किसी समय पर रखिए। परिसर में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दि जाइए राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दि जाइए राज्यपाल के हरिबाबू
विधानसभा परिसर भीतर को प्रवेश करुछंती। तो आपण पूरा चित्र देखि पारुछंती। विधानसभा परिसर रे राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जिबा परे राज्यपाल को पाछोटी निया जाउछि। विधानसभा गृह भीतर को प्रवेश पथ को निया जाउछि एवं निजे बाचस्पति मध्य राज्यपाल को निया जाउछंती। तार पूरा चित्र देखि पारुछंती एवं गृह कार्य आरंभ हेबो। किछि समय भितर गृह को संबोधित करिवे राज्यपाल के हरिबाबू एवं बजेट अधिवेशन आज ठारू विधानसभा बजेट अधिवेशन आरंभ हेबाकु जाउछि एवं कुआ जाउछि बजेट अधिवेशन रे सरकार को निजर स्ट्राटेजी मध्य प्रस्तुत करिसेंती। तो बड़ कथा होछि कि एथर विधानसभा बजेट अधिवेशन कुआ जाउछि बेस सरगरम रही पारे। शासक दल को घेरिबा को बीजेडी कांग्रेस निजर रणनीति करिसेंती। 9 मासर सरकार को विभिन्न प्रसंग रे विरोधी जवाब मध्य मागी पारंती एवं केजी समय पूर्वर पूरा चित्र आमे आपनको पूरा देखाउछु एवं मुकेश महालिंग संसदीय व्यापार मंत्री मध्य केजी समय पूर्वर पहुंची सारिछंती। राज्यपाल गृह रे प्रवेश करि सारिछंती एवं निजर अभिभाषण रे प्रथम अभिभाषण के हरिबाबूंकर कौन कहिबे कहीं गृह कार्य आरंभ हो सारी। Jai Jagannath. Honorable Madam Speaker and honorable members, it is with immense pleasure that I welcome you all to the third session of the 17th Odisha Legislative Assembly. This marks my first address to this distinguished gathering, and I am deeply honored to stand before you today. Allow me to take this opportunity to extend my heartfelt New Year greetings to all the honorable members of this august House and to the people of Odisha. May this year bring progress, prosperity and harmony to our state and its citizens. This august House has expressed its deep condolences on the sad demise of late Samir Dey, ex-minister, late Surendra Mohan Maji, late Ashwini Kumar Guru, late Daneshwar Maji, late Makaradhwaj Pradhan, late Niranjan Pradhan, late Utkal Kesari Parida, late Purna Chandra Maji, all former members. I request all honorable members present today to join me in paying tribute to late Dr. Manmohan Singh, ex-Prime Minister of India, late Vijay Kumar Mohanty, late Sadan Nayak, all former members. The House may convey our heartfelt condolence to the bereaved families of the departed souls. Odisha is a canvas of unparalleled beauty and enduring legacy where every sunrise carries the promise of harmony and hope. Beneath its rugged hills lie a vast treasure trove of precious minerals, the silent testimony to its industrial might and economic promise. Above ground, the land bursts forth with vibrant life, a series of stunning beaches in the lap of Bay of Bengal, rocky mountains that rise like poetry in stone, and serene temples and monuments that whisper tales of a rich and glorious heritage. The people of Odisha are our greatest asset. Our artisans weave magic on stones and textiles. Our farmers sculpt life from
the earth. From the mystic land of Rusinganath in the west to the sacred abode of Lord Jagannath in the east, from the beautiful jungles and picturesque landscape in the south to the vibrant industrial landscape in the north, Odisha is an odyssey of nature, of history, and of the unyielding spirit of its people. Despite its glorious past, as a thriving center of overseas trade, rich mineral reserves, and abundant human resources, for many years post-independence, Odisha struggled to fulfill its immense potential. The state's promise often remained unrealized. The people of Odisha, with hope in their hearts and a vision for the future, opted change over continuity in the 2024 general election. Tired of waiting for a transformation that never seemed to come, they embraced the promise of my government that would listen, understand, and act. Their vote was not just a political decision, it was a declaration of faith. With eyes turned towards higher, brighter horizons, they entrusted my government with the hope of the poor, aspirations of the youth, dreams of the farmers, and the aims of women, believing that change would usher in a new era, an era of unmatched prosperity. With the mandate of the people and a determined vision for the future, my government shouldered the onerous responsibility of taking the state forward in the path of prosperity. With the mantra of empowering the Gyan, G-Y-A-N, that is Garib, Yuva, Annadata and Nari Shakti, my government presented its first budget in this August House in July 2024, a budget that is in line with the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. It's been just 8 months of assuming responsibility, and during such a short span of time, my government has taken various landmark decisions, launched numerous schemes, and hosted several programs in the interest of the state and the nation. My government implemented its flagship scheme, Subhadra, which is poised to benefit about 1 crore women of the state, rolled out Samruddha Krishak Yojana to provide input assistance of Rs 800 per quintal for paddy over and above the MSP. Opened inner Ratna Bandar of Sri Mandira honoring the demands of the devotees, and took up many initiatives to revive Odia Ashmita. My government's sincere effort in hosting the DG and IG conference in the month of November 2024 and the 18th Pravasi Bharatiya Divas visit of the Honorable President of Republic of Singapore and Utkarsh Odisha Make in Odisha conclave in the month of January 2025 are commendable. My government has received more than 3 lakh suggestions for Vision 2036, which aspires to build a Samruddha Odisha targeting a $500 billion economy by 2036. Looking ahead, my government has detailed plans for the goal of Vikasit Odisha for Vikasit Bharat 2047, which envisions Odisha contributing $1.5 trillion economy to India's economy by then. To achieve these goals, every individual, organization and the state at large must make the best use of this present time Amrut Kal to remain proactive, innovative and progress oriented. As the great agricultural scientist and Bharat Ratna awardee Dr. M.S. Swaminathan said, and I quote, "If agriculture goes wrong,
nothing else will have a chance to go right. Odisha, being an agrarian state, relies heavily on agriculture and allied sectors for its well-being and economic prosperity. Its rich agricultural heritage and traditional farming practices have sustained it despite recurrent natural disasters. Committed to advancing the sector, my government is prioritizing food, nutrition and income security for our farming population, the backbone of economic growth. Inclusive agricultural transformation will be driven by innovative technologies, enhanced irrigation, crop insurance and financial assistance, while global agricultural practices will be localized through international cooperation, research and policy coherence. With the visionary leadership of my government, I must say, agriculture is destined to become a spearhead of Odisha's prosperity and well-being. To strengthen farmer welfare, my government has taken special care to ensure all eligible farmers are covered under the PM Kisan initiative through a saturation drive. Through the Samruddha Krishak Yojana, my government has started procuring paddy from farmers at rupees 3,100 per quintal, including input assistance of 800 rupees per quintal during the current Kharif marketing season. My government has also prioritized crop diversification, focusing on pulses, oil seeds, vegetables and high-value crops across 2 lakh hectares. Through the rice fallow management project, steps are being taken to improve farm income, cropping intensity and soil health by leveraging partnerships with leading research institutes and local agencies. To safeguard farmers against climatic risk, my government has ensured robust crop insurance coverage with 1.36 lakh farmers registered for the Rabi season. Promotion of organic farming through the Odisha Balabhadra Jaivik Chasa mission is being piloted in areas like Daringabadi and Swabhiman Anchal. The efforts of my government target to reintroduce and popularize neglected crops include scientific collection, documentation and awareness initiatives under the Revival of Forgotten Foods program. My government is committed to empowering women in agriculture by promoting mushroom and flower production on a mission mode involving women SHGs to make the state self-sufficient in these sectors. The promotion of agriculture production clusters in tribal regions has created livelihood assets and market linkages for more than 2 lakh women SHGC members through 1,757 producer groups and 62 producer companies. Under Mukhyamantri Krishi Udyog Yojana, my government is promoting agri-enterprises by facilitating access to credit. My government is also supporting farmer producer organizations with financial, technical and infrastructural assistance, ensuring better income opportunities and socio-economic development for small and marginal farmers. My government is undertaking several initiatives to boost the fisheries and aquaculture sector. For enhancing livelihoods, excavation of new tanks and productivity enhancement of existing ponds are taken up under the Matsya Chasa Paina Nuva Pokari Kola Yojana.
The financial assistance for boats, engines and nets supports marine fishermen with modern equipment, ensuring their safety and productivity. Additionally, the biofloc technology for intensive pisciculture has revolutionized fish farming with thousands of units already established and plans to expand further. To enhance fish production in reservoirs, advanced fingerlings and freshwater prawn juveniles are regularly stocked, benefiting key regions like Balimala Reservoir. Modernization efforts include the popularization of fisheries, machinery and equipment, enabling farmers to adopt advanced tools for increased efficiency. The Fish Seed Hatcheries program focuses on producing genetically improved strains of fingerlings, ensuring a steady supply for grow-out farming and reservoir stocking. Under the Infrastructure Development Program, during the financial year 2024-25, upgradation of the fishing harbour at Damra, construction of one new fishing harbour at Chandipur, construction of 3 fish landing centres at Kalupada Ghat, Soran and Kasia are under development for better fish landing, reduced post-harvest loss and maintenance of hygienic fishing standards. The livestock sector focuses on a sustainable growth, enhancing productivity and ensuring the welfare of animals. The sector aims to empower farmers, boost rural livelihoods and contribute significantly to food security and economic development. To enhance milk production in the state, my government has launched Mukhyamantri Kamadhenu Yojana, under which beneficiaries are assisted in establishing small dairy units of 2 crossbred cows, supported with subsidized calf feed for female calves, insurance of milch cows with 85% subsidized premium, and provision of incentives to dairy farmers for pouring of milk in dairy cooperative societies. Further emphasis has been given to use of sex-sorted semen with an objective of producing around 90% female cows with high genetic merit. My government has launched Prani Sampada Samruddhi Yojana, which supports the farmers to take up livelihood activities through various schemes under poultry, goat, pig and duck farming, thus enhancing meat production in the state. My government, under the scheme Goal for Management and Treatment of Animals, Gomata, provides comprehensive veterinary health care services to farmers at field veterinary institutions and at the doorsteps of farmers through mobile veterinary units, along with prompt diagnosis and preventive measures for control and containment of animal diseases. Under Mukhyamantri Prani Kalyana Yojana, my government provides financial assistance for feeding and maintenance of stray and destitute cattle in private goshalas, establishment of new goshalas and establishment of Godan Kendras. Further, an animal helpline 1962 and ambulance services are being provided to rescue stray and abandoned animals at 11 urban locations. Indigenous breeds are naturally adapted to local environments, making them vital for climate resilience. My government has introduced a new scheme, Conservation of Native Breeds, for preserving the genetic diversity of native breeds of the state. My government has integrated all 66 regulated market committees
with the National Agriculture Market (ENAM) achieving e-trading worth 4,512 crore rupees till December 2024, with over 4 lakh farmers, 621 farmer producer organizations, and nearly 10,000 traders registered in the platform. Specialized commodity marketing has been streamlined for key crops through Odisha State Agricultural Marketing Board, while functional infrastructure like weigh bridges, electronic weighing machines, moisture meters, and other equipment have been provided to PSCs and paddy procurement centers for effective paddy procurement. To strengthen post-harvest management, 128 multi-purpose growdowns at the level of PSCs, LAMPS for storing of fertilizers and seeds have been initiated, and construction of 28 integrated pack houses in 14 districts under 21 RMCs have been approved. Additionally, 6 model mandis with modern amenities are being operationalized as a pilot project to enhance market efficiency and benefit farmers. My government has made remarkable strides in irrigation and water management, ensuring water security and enhancing agricultural productivity. Odisha has been awarded 5th National Water Award by the Union Ministry of Jal Shakti for being the best state in the field of water conservation and management. Significant progress has been achieved in the distribution systems of key irrigation projects such as the Lower Suktel project in Bolangir, Kusumi Smart Irrigation Project in Nayagar, and the Gangadhar Meher project in Bargar. Construction of the UGPL distribution system under the Sandul Barrage project is underway to provide assured irrigation to 5,000 hectares and drinking water to Kalahandi district. Notably, the Parvati Giri Mega Lift Irrigation Scheme has completed 205 projects, creating 2.6 lakh hectares of Ayakat area, with 170 additional projects in progress. To augment water storage and ensure sufficient utilization, my government has implemented multiple initiatives. The in-stream storage structure scheme, with 72 projects under its fold, has completed 6 structures and 23 more are set to be completed by 2025-26. Through the Mukhyamantri Abhivandana Tayari Yojana, 158 check dams have been completed and 209 are under construction, while the improvement to tanks and MIPs scheme has rehabilitated 316 minor irrigation projects and is progressing on 188 more. To address climate resilience and sustainability, my government has undertaken the Mukhyamantri Disaster Resilience Saline Embarkment Project, covering 193 kilometers of saline embankments in Balasore, Bhadrak, Kendrapara and Puri districts, with 96 kilometers already completed. The Odisha Integrated Irrigation Project for Climate Resilient Agriculture, supported by the World Bank, has stabilized 14,463 hectares of Ayakat through the renovation of 151 MIPs. Additionally, rehabilitation efforts under the Dam Rehabilitation and Improvement Program and drainage improvement measures have restored over 10,000 kilometers of drains and retrieved nearly 2 lakh hectares of waterlogged agricultural land, emphasizing the sustainability and enhanced water use efficiency. My government is rejuvenating
the Hirakud Canal system after 46 years with an investment of 855 crore to ensure efficient water management in the Hirakud command area. Additionally, my government has already secured forest clearance for the Brutanga irrigation project, which shall irrigate 23,300 hectares in 5 drought-prone blocks of Nayagar. The foundation for the Upper Lanth irrigation project in Bolangir, costing 300 crore, has also been laid. In the words of the visionary leader, Dr. B.R. Ambedkar, I quote, "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved," unquote. Recognizing the pivotal role of Nari Shakti in nation building and in achieving the vision of a Samruddha Odisha by 2036, my government has prioritized the empowerment of women. In 2024, the innovative Subhadra scheme was launched to empower about 1 crore women aged between 21 to 60 by providing financial assistance, fostering financial independence, and raising awareness of their rights. Under this scheme, beneficiaries receive 50,000 rupees over a period of 5 years. Subhadra reflects my government's unwavering commitment to women's empowerment and inclusive development. My government is committed to improving the health and nutrition of women and children. Approximately 46 lakh beneficiaries, including children, pregnant women, and lactating mothers, are being provided nutritious food under various schemes. The Pada Pushti Karikramam ensures outreach to hard-to-reach villages, and the Purna Ahara program has a cure rate of 79% of severely malnourished children. Ama Kuni Paila scheme focuses on the early cognitive development of children under 3 years. It involves parent-led stimulation campaigns, fostering behavioral changes through various activities, and aims to achieve holistic development of children. Additionally, the Malati Devi Prak Vidyalaya Paridhan Yojana provides uniform to preschool children, benefiting 18 lakh children during 2024-25. Under the Palana scheme, my government provides a safe environment for children of working mothers. The initiative supports female workforce participation by offering mother care support and ensuring children's safety while mothers are at work. San Gachadvam, Sam Vadadvam, Sam Vo Manamshi Janatham. Meaning, let us move together, speak in harmony, and let our minds comprehend alike. Rigveda. My government is committed to providing social security and empowerment to the vulnerable sections such as Divyang or persons with disabilities, destitute and widows, senior citizens, transgenders, persons affected by AIDS, persons cured of leprosy, beggars and victims of substance abuse. Social security pensions are provided to 57 lakh persons, covering the highest percentage of population amongst all states in the country. My government has also made provision for pension in favor of destitute, deserted, divorced women, orphan children, and widows who are the victims of COVID-19 under Madhu Babu Pension Yojana. My government has enhanced social security pension for beneficiaries aged 80 years and above, and beneficiaries with more than 80% disability to 3,500 rupees per month with effect from
January 2025. My government prioritizes the education and empowerment of Divyang, persons with disabilities. 104 special schools and 1 college, especially for the hearing impaired, are running in the state for providing education to 6,815 Divyang students. Free laptops are being distributed to Divyang students pursuing graduation and higher studies. Banishri scholarships have been provided to 29,233 Divyang students. 5,092 physically, mentally and socially challenged persons have been rehabilitated through 78 therapy centers, halfway homes. Total 3,349 Divyang SHGs have been formed for the economic empowerment of Divyang through different government programs. Bima Bhoi, Binnachayama, Samadhya Abhiyan camps are being organized at the block and Gram Panchayat levels to provide aids and appliances to the Divyang. My government has implemented the Sahaya scheme for the welfare and rehabilitation of beggars and destitutes. Schemes like Abadana and Swikruti are being implemented for the welfare of senior citizens and transgenders respectively. My government has increased the ex gratia payment for construction workers in case of accidental death from 4 lakh rupees to 6 lakh. In case of natural death, the ex gratia has been increased from 2 lakhs to 3 lakh rupees. My government is committed to empowering marginalized communities through comprehensive welfare programs that address critical needs and foster sustainable development. For the welfare of the scheduled tribes, my government is implementing the Dharti Aba Janajatiya Gram Unnat Abhiyan, a centrally sponsored scheme to achieve holistic and sustainable development in tribal-dominated areas. This initiative focuses on enhancing infrastructure, healthcare, education, and livelihoods in 7,667 tribal majority villages across 27 districts. It is said to benefit around 11 lakh ST households, covering a population of approximately 87 lakh. Notable interventions include the improvement of residential schools, effective management of Forest Rights Act provisions, establishment of tribal multipurpose marketing centers, and sickle cell disease management. Additionally, the Janajati Atiya Swabhiman Bhavan and Janajati Basa Vo Samskriti Pratisthana are being set up in Bhubaneswar to celebrate tribal heritage and promote cultural preservation. For scheduled castes, my government has raised the intercaste marriage incentive to rupees 2.5 lakhs per couple, benefiting 1,108 couples during 2024-25. To address cases of atrocities, the Sakar portal has been launched, expediting investigations and compensation disbursement. Under Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyudaya Yojana, efforts are focused on poverty alleviation, skill development, infrastructure improvement, and education. Odisha has declared 923 villages as Adarsh Grams, and 176 hostels have been sanctioned under the Babu Jagjivan Ram Chhatrabas Yojana to improve educational access for SC students. Dharma, Ardha, Kama, Mochamam, Arogya Moolam Uttamam, meaning health is the ultimate foundation for achieving righteousness, wealth, aspiration,
and Liberation, Chakra Samhita. My government is implementing the Gopabandhu Jana Arogya Yojana, providing cashless health coverage of rupees 5 lakh for family annually, with an additional 5 lakh for women members. Beneficiaries under National Food Security Act and state food security schemes can access this at over 900 empaneled hospitals in 17 states, including Odisha. For rural residents not covered under NFSA or SFSS and who are not government employees, pensioners, or income tax payees, similar benefits are extended for critical ailments. Odisha has joined Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jana Arogya Yojana, thereby expanding coverage to 3.50 crore people at over 29,000 empaneled hospitals nationwide. My government has strengthened 7,358 health and wellness centers under the Ayushman Arogya Mandir initiative to provide primary health care services, including yoga and wellness activities. Additionally, Ayushman Arogya Shivir health camps conducted monthly at HSCs and PHCs brought healthcare closer to communities, serving over 16 lakh people through 24,700 camps in just 5 months. My government continues to improve maternal and infant health through targeted reproductive, maternal, newborn, child, adolescent health and nutrition programs, reducing mortality rates. Under PM Jan Man, the particularly vulnerable tribal groups receive dedicated mobile health services and A&M support, benefiting over 1.52 lakh individuals. My government addresses urban health challenges through the NUHM, operating 116 urban primary health centers and 7 urban CHCs. Free diagnostic services under Nidan have benefited more than 3.45 crore patients annually, demonstrating the state's commitment to accessible health care. My government ensures emergency medical care through the 108 ambulance service, which operates 860 vehicles, serving 3,100 patients daily with an average response time of 20 minutes. In a boost to the medical education in the state, construction work is already over for 2 new medical colleges at Talcher and Fulbani, and they are expected to begin admissions in 2025-26 for the MBBS students. As part of my government's initiative to enhance healthcare infrastructure, the foundation stone for new nursing college has been laid in Koraput in December 2024. Additionally, the Honorable Prime Minister laid the foundation for a 100-bedded National Institute for Yoga and Naturopathy on 29th October 2024. Construction of 55 healthcare facilities, including daycare PHCs, block public health units, and subdivision hospitals buildings in Malkangiri, Mayurbhanj, and Bolangir has started. Strengthening human resources. My government appointed 659 medical officers and paramedics, including 2,753 multipurpose health workers, female, 239 radiographers, 85 homeopathic medical officers. Ayurvedic medical officers and 19 Ayurvedic lecturers to enhance healthcare delivery. Jajati Keshari Medical College, Jajpur, was made functional during the current year
with admission of first batch of 50 MBBS students. A partnership with MGM Healthcare Chennai has initiated heart transplantation services at SCB Medical College and Hospital, Cuttack, and the state's first bone bank was also inaugurated at SCB MC&H, Cuttack. My government has decided to implement National Education Policy 2020. To further strengthen implementation of the policy, the state has also decided to adopt the National Curriculum Framework, which will be contextualized as the State Curriculum Framework. This is set to benefit about 77 lakh school children studying in 61,693 schools in the state. Through this step, state is geared to enable the students to be on equal footing with the students of different national and central boards empowered by the Samagra Shiksha. By advocating early childhood education, flexible curricula, and multilingual instruction, NEP implementation will ensure that learning is both accessible and inclusive, catering to diverse needs across the state. My government has implemented PM schools for Rising India, and elementary, high and higher secondary schools are being transformed at the block level into the centers of excellence with modern learning environments serving as role models and providing leadership in their respective regions. Nipun Odisha Mission, a flagship initiative of the state as envisioned in NEP 2020, has been launched and is set to benefit over 15 lakh students of grades 1, 2 and 3 of about 45,000 schools. My government is working towards enhancing the quality of early childhood education in early childhood through teacher training programs, focusing on play-based learning and making resources available to children from diverse backgrounds. My government is making significant strides in improving foundational literacy and numeracy by using specialized teaching methodologies, creating age-appropriate learning materials, and employing technology to support learning. Through Goda Bishra Adarsha Pradhamik Vidyalaya, my government aims to develop 6,794 elementary schools, one in each panchayat, into holistic learning centers with multidisciplinary education, infrastructural improvements, socio-emotional learning, life skills education, and equitable learning environments. Through Panchasaka Sikya Setu, my government is supporting transformation of pedagogy and teaching methods while enhancing the ecosystem for strengthening school functioning by involving all stakeholders. In consonance with my government's commitment to Odia Asmita, the state has identified 51 Aitya Vidyalayas, pre-independence era schools, for development as centers of excellence equipped with quality infrastructure, learning resources, and innovative educational programs of international standard. Development of these schools will act as a bridge. उन्नीस सिख विरोधी हिंसार एक मामलें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी सब्यस्त दिल्लीर स्वतंत्र कोर्ट यह राय शुणाई आसंता 18 तारिख में कोर्ट सज्जन कुमार प्रति दंड विधान कर 1984 नवेम्बर पहले दिल्ली राजेंद्र नगर में एस जसवंत सिंह एवं पुओ एस तुरणदीप सिंह को हत्या कर सज्जन कुमार नेतृत्व में शताधिक लोक राजेंद्र नगर जा गंडगोल करते हिंसाकांड घटाई अभियोग होता। सामना को आसिला केरल नर्सिंग कॉलेज अमानवीय रैगिंग। कोटायम सरकारी नर्सिंग होम रे होइतिबा ए रैगिंग नै एबे सारा देशर चर्चा।
प्रथम वर्षर 3 जन छात्रों प्रति 3 मास धरी निहाती अमानवीय रैगिंग करि चलिथिले नर्सिंग तृतीय वर्षर 5 जन छात्र। रैगिंग शिकार होइतिबा छात्र माने तिरुवनंतपुरम थानार अभियोग पर पुलिस संपृक्त 5 जन गिरफ्त करछि। आउ नाहाती अयोध्या राम मंदिर पूज्य पूजक सत्येंद्र दास। लखनऊ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज और हॉस्पिटल रे चिकित्सा बेले तांकर मृत्यु होईछि। तांकु 83 वर्ष बयस होइतला। स्वास्थ्यगत समस्या देखा देबारु गत 3 तारिख रे तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतला। से उच्च रक्तचाप मधुमेह एवं स्नायुविक रोग रे पीड़ित थिले। 20 वर्ष बयसरु संथ जीवन आरंभ करथिले सत्येंद्र दास। गाजा रे अमेरिकार राज ही चलिबो। गाजा ही हेबो अमेरिकार आउ एक अंश विशेष। गाजा प्रसंग में पुणी एमिति दोहराइछंती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। व्हाइट हाउस रे जॉर्डन राजा अब्दुल्ला द्वितीय सह साक्षात आलोचना पर सांबादिक मानकु यह कहिसेंती राष्ट्रपति ट्रम्प। गाजा को भिन्न शैली रे विकसित करा जिवो। अमेरिका गाजा को विकसित करबा परे मध्य प्राच्यर लोके ही सेठारे रहिबे बोली कहिसेंती ट्रम्प। दुर्नीति तालिका रे आउ 3 पाद तळकु खसिला भारत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तथ्य अनुसार 180 देशर तालिका रे गत वर्ष भारत 93तम स्थान रे थिला। एथर 96 नंबर स्थान को खसछि। तालिकार टॉप रे अर्थात 180 नंबर स्थान रे रहिछि दक्षिण सुदान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तथ्य अनुसार दक्षिण सुदान ही विश्वर सबुठारु दुर्नीतिग्रस्त देश। डेनमार्क ही विश्वर सबुठारु कम दुर्नीतिग्रस्त देश। अपार्टमेंट पंजीकरण संपर्कित विज्ञप्ति उपरे अंतरीण स्थगितादेश जारी करछंती हाईकोर्ट। गृह नगर उन्नयन विभाग पक्षरु 2023 मसिया रे जारी होइतिबा एही विज्ञप्ति उपरे स्थगितादेश जारी करछंती हाईकोर्ट। 2017 मसिया पूर्वरु निर्माण शेष होइतिबा अपार्टमेंट पंजीकरण उपरे लागू हेबो नाही राज्य सरकारक पक्षरु कुहा जायतला, जाहाकु हाईकोर्ट रे चैलेंज करथिले एकाधिक आवेदनकारी। आसंता My government has chalked out road map for excellence in higher education. At least 5 new centers of excellence in state universities will be opened to promote advanced learning, research and innovation in critical fields. Efforts will be made to create a 1984 सिख विरोधी हिंसार एक मामलें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी साब्यस्त। दिल्लीर स्वतंत्र कोर्ट एही राय सुनाइछंती। आसंता 18 तारिख में कोर्ट सज्जन कुमार प्रति दंड विधान करा जिवो। 1984 नवेम्बर 1 रे दिल्ली राजेंद्र नगर में थिबा एस जसवंत सिंह एवं तांको पुओ एस तुरणदीप सिंह को हत्या करा जायथिला। सज्जन कुमार नेतृत्व में शताधिक लोक राजेंद्र नगर जाई गंडगोल करथिले, हिंसाकांड घटाइथिले बोली अभियोग होइतिला। सामना को आसिला केरल नर्सिंग कॉलेज रो अमानवीय रैगिंग। कोटायम सरकारी नर्सिंग होम रे होइतिबा ए रैगिंग नै एबे सारा देश रे चर्चा। प्रथम वर्षर 3 जन छात्रों प्रति 3 मास धरी निहाती अमानवीय रैगिंग करि चलिथिले नर्सिंग तृतीय वर्षर 5 जन छात्र। रैगिंग शिकार होइतिबा छात्र माने तिरुवनंतपुरम थानार अभियोग पर पुलिस संपृक्त 5 जन गिरफ्त करछि। आउ नाहाती अयोध्या राम मंदिर पूज्य पूजक सत्येंद्र दास। लखनऊ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज और हॉस्पिटल रे चिकित्सा बेले तांकर मृत्यु होईछि। तांकु 83 वर्ष बयस होइतला। स्वास्थ्यगत समस्या देखा देबारु गत 3 तारिख रे तांकु हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतला। से उच्च रक्तचाप मधुमेह एवं स्नायुविक रोग रे पीड़ित थिले। 20 वर्ष बयसरु संथ जीवन आरंभ करथिले सत्येंद्र दास। गाजा रे अमेरिकार राज ही चलिबो। गाजा ही हेबो अमेरिकार आउ एक अंश विशेष। गाजा प्रसंग में पुणी एमिति दोहराइछंती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। व्हाइट हाउस रे जॉर्डन राजा अब्दुल्ला द्वितीय सह साक्षात आलोचना पर सांबादिक मानकु यह कहिसेंती 28 admitted in polytechnics through the SAMS Student Academic Management System portal. My government's focus is on quality improvements with 8 government ITIs placed in the top 100 positions in India and 5 government polytechnics ranked among the top 10 in the state. Technological advancements have been integrated into ITI and polytechnic curriculums, introducing new age trades like IoT, 3D printing, drone technology and e-vehicle labs, ensuring students are industry ready. To make ITIs and polytechnics industry ready and aspirational, my government is undertaking regular infrastructure upgrades to ensure the availability of the state-of-the-art facilities.
Additionally, my government is focusing on transforming Odisha University of Technology and Research, Bhubaneswar, and Veer Surendra Sai University of Technology, Burla, into world-class technical universities while improving key performance indicators such as NAC and NIRF rankings. My government is also implementing centrally sponsored schemes such as Sankalp, skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion, and establishment of model career centers. The object of the Sankalpa scheme is to strengthen skill development ecosystem and increase access to quality and market relevant training for youth across the country. Odisha has made significant strides in the field of sports. Our state continues to emerge as a powerhouse in nurturing talent, hosting world-class events, and building infrastructure that stand as a model for the nation. For the first time, Team Odisha achieved a historic victory at the Hockey India Senior Men's National Championship 2024, emerging champions, while our senior women's football team emerged runners-up in the national championship. Similarly, in athletics, swimming, kho-kho and several others, our athletes have excelled. Odisha is a preferred destination for prestigious sports events that celebrate both international and national talent. Hockey India League, Odisha Masters 2024, ITF World Tennis Tour M25, National Junior Athletic Championship, Asmita Kelo India Women's Weightlifting Championship, National Aquatic Championship, and Indian Super League were amongst the key events hosted. My government is committed to provide Pakka houses to all homeless people and households staying in Kacha houses through rural housing schemes. The centrally sponsored scheme, Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, is successfully implemented with 40% of matching state share. State has also launched Anchodaya Graha Yojana with a view to achieving the objective of shelter security to all. My government is committed to create affordable houses for all through implementation of PM Awas Yojana in the urban areas as well. Access to clean and safe drinking water is a fundamental right that my government is determined to uphold. Necessary efforts are being made by my government to ensure supply of safe and sustainable drinking water to all the rural households through functional household tap connections by 2026. My government envisions to saturate all 115 cities in Odisha with household tap connections, ensuring 24/7 potable water supply. This will help public health, reduce incidence of waterborne diseases, and promote sustainable urban living. Sanitation is a cornerstone of the vision of Vikasit Bharat. About 4.20 lakh individual household latrines have been constructed during 2024-25 till December 2024. To ensure universal sanitation access and to sustain the ODF status, more than 497 community sanitary complexes have been constructed in the state. All the 6,794 Gram Panchayats of the state have adopted the bylaws for solid waste management, and all GPs are now prioritizing safe management of solid and liquid waste.
As on the date, 96% villages have been declared as ODF plus, and more than 44,825 villages have been declared model villages during 2024-25 up to December 2024. My government has proposed a new scheme, Swachh Odisha, to enhance solid, liquid and wastewater management in cities. Key measures include 100% bio-remediation of legacy waste, establishment of biogas plants in larger cities, and strengthening solid waste management systems. My government's key focus is on ensuring safe and inclusive travel for all citizens. As we work towards a Vikasit Odisha, my government is laying the foundation for a brighter and more connected future, where every citizen has the opportunity to thrive and contribute to the progress of our great nation. Initiatives such as the women special buses, staffed entirely by women, demonstrate commitment to prioritizing safety and empowerment for women. The Mukhyamantri Bus Seva initiative focuses on providing affordable and efficient bus services connecting remote areas to urban centers and enhancing regional mobility. This significant step demonstrates commitment to ensuring safer roads for all citizens. Efficient urban mobility forms the backbone of thriving cities. शीघ्र बंद हो रूसिया यूक्रेन युद्ध रूस राष्ट्रपति सहित कथा ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप सहित कथा जेलेन्स्की को फोन कर रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तेज अमेरिका आनी युद्ध बंद प्रस्ताव में रूसिया सहित यूक्रेन केते दूर समर्थन केते सहमत हो संदेह प्रकट कर पुतिन अन्यपटे युद्ध बंद को नहीं बड़ कथा कही अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ओभाल ऑफिस ट्रंप ऑफिस पक्षर कहुई आम चाहूँ कौन से लोकंर युद्ध में मृत्यु न हो मु भावुँ राष्ट्रपति पुतिन शांति चाहते राष्ट्रपति जेलेन्स्की शांति चाहते मुझे चाहूँ बोली अमेरिका राष्ट्रपति कहते ट्रंप कहते पुतिन मन भर कौन अच्छी कौन से लोक जानती ना कि विश्वास सहित कहबी जे ए युद्ध में पूर्णच्छेद पड़ू यह चाहते रूसिया राष्ट्रपति और आम से दिगरे काम आरंभ करूँ खूब शीघ्र एने पदक्षेप नियाजिबो भारत प्रधानमंत्री साउदी अरब राष्ट्रमुख्यों सहित साक्षात आलोचना करेंगे ट्रंप से समय रूसिया यूक्रेन युद्ध बंद प्रस्ताव में स्थायी भाव में मोहर बाजिबार संभावना रही फेब्रुआरी 22 रे रूसिया यूक्रेन युद्ध आरंभ होता अमेरिका रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में पहुंचवा पर मोदी को जोरदार स्वागत करा जायछि 2 दिनिया अमेरिका गस्तरे जाइतबा प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साक्षात करेंगे द्वितीय थर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकार राष्ट्रपति भाव में शपथ नेबा परे आज प्रथम थर पई ट्रंप को भेटिबे अंडर पीएमजीएसवाई एंड 975.07 किलोमीटर्स अंडर मुख्यमंत्री सड़क योजना. That apart, 150 kilometers of roads have been sanctioned by Government of India under PM Jan-Man to provide connectivity to unconnected, particularly vulnerable tribal group habitations. Further, during the current financial year, 112 bridges have been completed. Urbanization is one of the key drivers of economic growth and social progress in any region. My government envisions Odisha's cities as vibrant socio-economic hubs that uplift the lives of their citizens. Addressing critical urban infrastructure gaps remains a top priority. My government has initiated a new scheme, Mukhyamantri Sahari Vikas Yojana, for improving civic communities across all cities, aiming to foster inclusivity and sustainability. Smart city development forms a significant part of this plan, incorporating urban green spaces, open gyms, parks, rooftop solar projects, and rainwater harvesting systems to build resilience against climate change. This scheme also intends to meet
During the 2024-25, Odisha has witnessed significant infrastructure development. Infrastructure is key to economic growth and achieving Samruddha Odisha by 2036. 32 national highways measuring 5,753 kilometers in length passes through the state, out of which 2,833 kilometers is under the control of National Highways Wing of the state, and 2,920 kilometers have been transferred to the National Highway Authority of India for maintenance and improvement. Rail connectivity to all districts is a top priority. My government is working in coordination with the central government on key railway projects designed to connect underserved districts, driving regional connectivity and economic growth. Projects like the Khurda Road, Balangir lines are prioritized to bring these benefits to fruition. Other key projects like the Jaipur, Navrangpur and Jaipur, Malkangiri rail lines are vital for connecting Odisha's hinterlands, boosting regional integration, enhancing connect to remote tribal areas and driving economic growth through improved transportation. My government is grateful to the Government of India for prioritizing rail connectivity to the underdeveloped areas and sanctioning pivotal projects, namely Badampahar, Kionjar, Bangiri Poshi, Guru Mahasani, Bargar Road, Naupada Road, New Line, Barmara, Chakulia, Gunpur, Tiruvali, New Line, Jonagar, Navrangpur, New Line, Malkangiri, Pandurangapuram, via Bhadrachalam, and Sadega, Sundargarh, Balumuda, Chhattisgarh, new double line. My government is committed to ensure 24/7 quality and reliable power to each and every citizen of the state. Odisha is power surplus now and would continue to remain surplus in the coming years too. The average power supply hours both in rural and urban areas have increased, and the per capita usage of electricity in the state has also increased vis-a-vis the national context in the recent years. Universal access to electricity is being ensured through different people-centric schemes. State has become one of the most preferred destinations for investors due to large-scale developments in generation, transmission and distribution infrastructure. My government is also committed to meet the net zero target by encouraging development in green and clean renewable energy projects for a sustainable and climate resilient future. The Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave 2025 was organized on the 28th and 29th of January 2025 in Bhubaneswar to attract both domestic and international investments across diverse sectors, positioning Odisha as the industrial powerhouse of Eastern India. This dynamic platform highlighted Odisha's industrial strengths, unparalleled strategic advantages, and vast growth opportunities for investors from across the globe. It offered key networking opportunities, fostering collaboration between global industry leaders, policymakers, and investors. My government signed MOUs worth 12.89 lakh crore rupees for investments across sectors such as chemicals and petrochemicals, textiles, mining and metallurgy, renewable energy, IT, ITES, tourism and food processing. Additionally, 448 investment intention forms were received with an investment value of 3.84 lakh crore and employment potential of
3.92 lakh jobs. During 2024-25, more than 400 startups have already been supported through different financial and non-financial assistance. More than 1,000 students have also been connected to entrepreneurial ecosystem through awareness programs and innovation challenges. My government scheme, Chief Minister's scheme for reimbursement of interest to MSMEs, is progressively designed to reduce the interest burden of the manufacturing MSMEs by reimbursing the interest on working capital. Under the scheme, around 19 crore has already been disbursed to 1,843 beneficiaries during 2024-25. During the financial year 2024-25, around 100 crore rupees of margin money assistance, that is the subsidy, have already been sanctioned under Prime Minister Employment Generation Program. To support the people engaged in traditional crafts financially, as well as to keep the age-old traditions and diverse heritage alive through local products, arts, crafts, PM Vishwakarma scheme is being implemented in the state. Under the scheme, 4,908 number of loans have been sanctioned with a disbursement of 36 crore rupees. My government has taken decisive steps for creation of 50,000 jobs in the textile sector in next 2 years and 50,000 jobs in ITES in next 5 years. Additionally, 1.5 lakh government jobs would be filled up over the next 5 years with 65,000 posts in the first 2 years. More than 24,000 government vacancies has already been filled up during 24-25. The Lakpati Didi initiative under the National Rural Livelihoods Mission aims to help women SHGC members earn at least 1 lakh annually. My government plans to empower 25 lakh women as Lakpati Didis by 2027. During the financial year 24-25, around 10 lakh women would be trained to attain this level of income. Tourism is a key driver of economic growth and a platform for showcasing the vibrant culture, heritage and natural beauty of Odisha. Our tranquil beaches and Kalingan architecture is unmatched in the world. As Odisha strives to be amongst the most sought after global tourism destinations, the role of our people, especially the youth and women, becomes paramount in development of the sector. Recognizing their potential, my government has placed a strong emphasis on capacity building and skill development in the tourism sector, empowering individuals to contribute to this dynamic industry. I am proud to highlight that Maniyabanda has been awarded as Best Tourism Village Award by Ministry of Tourism, Government of India. Puri has been awarded Best Pilgrim Destination Award 2024 at IITM Pune and Eco Retreat. आपण माने वर्तमान सीधासलख दृश्य देखुथिले विधानसभा एबे आसीबा गोटे बड़ खबर को सना को कड़ा तागिद करिसेंती नवीन पटनायक। चंपुआ बीजेडी विधायक सना महाकुड़ को नवीन कड़ा तागिद करिसेंती। बीजेडी विधायक दल बैठक को काहे की आसी नथिले बोली पचारिथिले नवीन एवं कारण दर्शाइथिले सना महाकुड़ असुस्थतार। एबे अन्य पक्षरे तेरछा बाण मारिछंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। देह असुस्थता ना बीजेपी आड़ को जाउछंती एकथा कही तेरछा मारिछंती नवीन। सना महाकुड़ को कड़ा तागिद करिछंती नवीन पटनायक। चंपुआ बीजेडी विधायक सना महाकुड़ को नवीन कड़ा तागिद करिछंती। नवीन पचारिथिले बीजेडी विधायक दल बैठक को काहेकि आसी नथिले सना महाकुड़, किंतु अन्य पक्षरे सना महाकुड़कर उत्तर थिला असुस्थता कारण।
किंतु देह असुस्थता ना बीजेपी आड़ को जाउछंती कही तेरछा मारिछंती नवीन पट्टनायक वर्तमान कड़ा आभिमुख्य देखा मिली। प्रत्येक विधायक और प्रत्येक नेता जेमिति सेमाने सेमानकर आभिमुख्य स्पष्ट रखिबे से नहीं कि श्योर करूछंती निजे बीजेडी सुप्रीमो। चंपुआ बीजेडी विधायक सोना महाकुड़ को मध्य नवीन कड़ा तागिद करिछंती। आपण बर्तमान प्रतिक्रिया शुणुले केमिति भाबरे नवीन पट्टनायक तांको पचारिले एवं उत्तर पाइला परे केमिति तांको तेरछा बाण मारिछंती निज कथा शैली रे केमिति भाबरे नवीन तागिद करिछंती सोना महाकुड़ को। सहयोगी महेश प्रसाद नंद अछंती हमस्त फोन लाइन रे। महेश जेमिति भाबरे शुणिले बीजेडी सुप्रीमोंकर प्रश्न एवं तापरे तांकर उत्तर पुणी केमिति शैली रे थिला सोना महाकुड़ को प्रति देखो आज जब आप देखिए विधानसभा गोटे रोचक दृश्य देखा मिलता जितेबले बीजेडी सुप्रीमो तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक जितेबले विधानसभा उद्देश्य विरोधी दल नेता रूम को जाऊँ से गाड़ी ओह्लैले से तमाम जो बीजेडी विधायक मान स्वागत करने छिड़ा हठात से नवीन विधानसभा भर प्रवेश कर नजर पड़ा चंपुआर विधायक सनातन महाकुड़ आप जानते गत काली बीजेडी विधायक दल बैठक अनुष्ठित होता से बैठक में सनातन महाकुड़ जी चंपुआर विजु जनता दल विधायक से अनुपस्थित रही तो जिते सनातन महाकुड़ नवीन को नजर पड़ा से प्रश्न कर पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आया तेणु यापर सनातन कहते तबियत खराब था अर्थात देह खराब कारण आसीपार ना जो पुनर्बार नवीन कथा शुणी पार ना से शारदा जेना बीजेडी एरसमार विधायक जी रही जोर कहते जो भयस टी आम जो टेलीकास्ट कर जो भयस आस तबियत खराब शारदा जेना भयस यापर नवीन कहते तबियत खराब ना आर यू गोइंग टू बीजेपी तुम देह खराब ना तुम बीजेपी आड़ को जाऊच तेणु नवीन का जो सोना को प्रश्न एवं तागिद पर ये निश्चित भाव गोटे राजनैतिक वर्तमान जमिति आभिमुख्य बीजेडी सुप्रीमोंकर रहुछि जेमिति भाबरे समस्त को ऊपर से नजर रखुछंती निघा रखुछंती किए बैठक को आसिला किए न आसिला बीजेडी रे जेमिति भाबरे चर्चा हेउछि आकु नै कि के विधायक काले ढळुछंती कि बीजेपी आड़ को किए विद्रोही हेबा को जाउछंती कि ए सब को नवीन पट्टनायक वर्तमान पूरा पूरी नजर रखुछंती। हाँ निश्चित भाव में पूरा नवीन पूरा कड़ा नजर रखुंट पूर्व जो आम खबर प्रसारण करते कि जो स्थान में मेली हो नवीन सीधा सड़क फोन करके तागिद कर क्रम में आप देखिए विभिन्न जगह नवीन बर्तमान कह से गोटे आक्टिव मोड को फेरी अर्थात कौन परिस्थिति में मेली कौन परिस्थिति में विशृंखला कौन परिस्थिति में विधायक दल विरोधी कार्य को से प्रश्रय दबा स्थित नहांती जहाँकि आज जो चित्र ही स्पष्ट करुच्ची पूर्व आप देखिए जो भाया मेली होता नवीन सीधा सड़क फोन करते गत काली खर्दार जो मेली होता नवीन सीधा सड़क फोन करते विधायक दल बैठक जी जो सनातन महाकुड़ अनुपस्थित रहा नवीन सीधा सड़क पचार गाड़ी आप देखिए कारण हुए तो जो सनातन महाकुड़ एक कथा नवीन चैम्बर को डाकी कही पारि था आप देखते जो निश्चय नवीन आसुंच सीधा गाड़ी ओह्लाउंट जिते विधानसभा प्रवेश पथर से प्रवेश कर सीधा सड़क नजर पड़ी सीधा सड़क पचार आप कहीं पार्टी मीटिंग के आसी आप असुस्थता ना बीजेपी आड़ को ढोल तेणु ये सब को जब आप देखिए नवीन पट्टनायक बर्तमान गोटे आक्टिव होती कौन सी परिस्थिति से विशृंखला को जेमिति भाबरे बीजेडी जो दलीय कंदल कथा सामना को आसुथिला किबा दल भितरे विद्रोहर कथा सामना को आस्तिला आपण कॉर्पोरेटर को कथा नियंतु किबा जे कोनोसी जिल्लार अध्यक्ष पद किबा सेमिति के चेयरमैन पद को नहीं कि ए सब जो चर्चा भितरे सामना को आस्तिला कि नवीन पट्टनायक हुए तो से सब शुणु नाहंती किबा देखु नाहंती बारंबार विद्रोह कथा सामना को आसी किंतु नवीन तो पूरा एक्टिव अछंती এবং सीधा सड़क मुहर कथा कही कि चुप भी कर देउछंती। हाँ निश्चित भाव कारण यही दृश्य ही सब किसी जो पूर्व जहाँ आकलन अनुमान नवीन
प्रकृत बुझीଛନ୍ତି ना अनेक नवीन विधायक मान से चिन्ह ना किंतु ए सब भूल प्रमाणित होती अर्थात नवीन बर्तमान कह सी एक्टिव एवं कौन परिस्थिति में कौन प्रकार जो दलीय विशृंखला को बर्दाश्त करने स्थिति में नहांती जार दृश्य जब आप देखिए जार दृश्य आप देखिए जे आज ए घटना आज ए दृश्य ये चित्र जना पड़ी तेणु ये घटना को जब आप देखिए नवीन एक्टिव कौन परिस्थिति में दलीय जो विशृंखला को सी बर्दाश्त करने स्थिति में नहांती निहाती भाव में आम सीधा सड़क शुणिले नवीन पट्टनायक से तागिद सना महाकुड़ को किपरि कड़ा तागिद करिसेंती नवीन पट्टनायक चंपा बीजेडी विधायक सना महाकुड़ को नवीन कड़ा तागिद करिसेंती पचारिथिले प्रश्न कि बीजेडी विधायक दल बैठक को काहींकी आसी नथिले सना महाकुड़ किंतु अन्य पक्षरे सना महाकुड़कर उत्तर थिला तांको देह असुस्थ थिला एवं एई कारण रे संतुष्ट हेले नाही नवीन पट्टनायक एवं तेरछा बाण मारिले कि देह असुस्थता ना बीजेपी आड़ को जाउछंती ए दुईटी प्रकार वर्तमान कथा या इंडिकेट करुछि वर्तमान पर्यंत जो सब घटनाक्रम बीजेडी दल भितर देखा मिलूँ बीजेडी दल भितर कंदलर कथा सामना को आसूची गोष्ठी कंदल विद्रोह ए सब को प्रशमित करने पूरा बीजेडी सुप्रीमो एक्टिव मोड रे वर्तमान अछंती बीजेडी सुप्रीमो एक्टिव मोड रे अछंती एवं एकाकी नुहे बरं जेमिति देखा होइछंती सेमिति ही ताको प्रश्न बाण ताको प्रति छाड़ी सना महाकुड़ प्रति एवं ए पूरा घटनाटी वर्तमान जमती निर्देश करुछि कि बीजेडी सुप्रीमो आ कोनोसी रिस्क नेबा मोड रे नाहंती जेमिति पर्यंत वर्तमान दलरु जणे जणे व्यक्ति छाड़ी कि अन्य दल मुहा हेउछंती किबा दल रे